Just one, two. Okay. Perfect. Welcome, Brittany. Thank you so much for doing this for us. Thank you for having me. I really appreciate this, just taking the opportunity to talk about ADHD. There needs to be more awareness on this in general. Right. So everyone, sorry we're a bit late because Brittany had some Wi-Fi issue and now we are here. So I would like to introduce our guest for this evening. This is Brittany Hochstetler, and she is BS in psychology from Indiana University, an MA in positive psychology and brain health certification from Amen Clinics. And her main focus is ADHD. And as I have seen so many of you just self-diagnose yourself and keep thinking that you have ADHD, let's try to find out what exactly is ADHD, what is ADD, and all of it. And that's why Brittany is going to help shed some light on this topic, which is, especially for India, it's not heard much of, but everybody assumes they themselves have ADHD. So I'm going to ask Brittany some questions. If you have any questions, please post it on YouTube. And just let me spotlight you and myself, Brittany, before we start at Spotlight. Okay. Okay, welcome, Brittany. Thank you so much once again for doing this for me. Thank you. Thank you for having me. And you say you're from India. Is most of your audience from India then? Right. I'm Indian, but I've lived in Jakarta for 25 years. Before that, I was in Hong Kong. And now I'm moving to Dubai next month. Oh, okay. Okay. Yeah, I've actually had quite a few. Okay. I mean, I don't tons of people from India, but quite a few that have reached out and said that, you know, just asking some questions about ADHD and then saying that in India, there's not a lot of awareness and there's not a lot of doctors that take it seriously. And so that's interesting that, I don't know, you're from India because I've been getting some messages. Right. I live in Jakarta, but yes, I deal with mostly, just let me switch off. Okay, so I deal with mostly Indians because I'm trying to help. The mental health situation in India is not so good. And I actually never assumed that I would be doing free counseling or anything of that sort. So during COVID, some people just came up that they were having a lot of mental health issues in India, lack of job and all of it. So I said, okay, let me just start. So 2020, and it's been 2 years, I've been doing this free of charge because mostly it's kids and people who have not started earning or have lost their job. And that's like a huge demographic in India. The children who can't talk to their parents and they don't seek mental health, the professionals, they can't either afford it or there's a stigma attached to it. So I started with that, and that's how I connected with you also, because I want some help to understand this topic. As a counselor, I have zero knowledge on ADHD, maybe the basics, what I've read, because I have not really studied. It's not my field. So this is how I connected with you. And I said, oh, ADHD, finally, I found someone who can help us and guide us. Yes, yes. Well, I'm happy to do so and to just take the opportunity to shed some light on some of this, like you were saying. And there's still a lot that we need to know about ADHD in general. I believe we have barely scratched the surface. Okay. We still, I mean, there are studies being published every single day. Wow. Okay. And so I think there's still a lot more to learn about it, but we're learning more every day. And it's really, really exciting to gain a better understanding of it. Okay, perfect. So let's start with the first question. What is ADHD? So ADHD, that stands for attention deficit hyperactivity disorder, and it is a neurodevelopmental condition. Symptoms often include impulsivity, hyperactivity, not being able to pay attention. So you may get distracted very easily, but you may also have the ability to hyper focus on whatever you're interested in. So I know we often hear, okay, I mean, people with ADHD, they can't ever pay attention. They're so distracted, and we are very distracted. We get distracted very easily, but if we like something, a lot of us, we can hyper focus on that
like no other. And it's also an attention issue when you think about that with the hyper focusing, because sometimes we can go a long time, like all day, without eating, without getting a drink. Some people, they're like, okay, I haven't gone to the bathroom in hours. It's like you're so focused on whatever you're interested in that you're blocking everything out. So I did want to point that out, because I think some people think, well, you can't ever pay attention if you have ADHD, and that's not always the case. That's a new one. I was never aware of that. Wow. Yeah. And person to person, is it? Some are hyper focused, or is it like time wise? Sometimes you can be focused, sometimes you can be distracted. Yeah, I would say so. Yeah, it depends what it is. And if you're interested in the topic or whatever you're focusing on, then it's all of that attention is going to that. And it happens all the time. It's not that it happens all the time. It's just that we can do it. Right. It does happen. But we still, yes, we get very distracted. We forget easily. I'm sure some of your listeners can resonate with this when I say, I mean, how many times do you walk in a room and you forget why you walked in there? Okay. Or, you're constantly losing your phone, your keys. You forget what your appointment that's coming up. You forget what someone just told you 5 minutes ago. It's very, very frustrating, but forgetfulness can be a challenge. Disorganization. Okay. Is very, very common too. Okay. So even I forget things. There are chats I'm scrolling and I switch to another chat and I forget what was I doing. I walk into a room. So, but that's isn't that normal human behavior? Is it like for anyone with ADHD, it is like if I am doing it like, let's say 10% of the time, are they doing it more often? Yes. So everybody does forget from time to time. People do get disorganized from time to time, and people do procrastinate from time to time. Right. This is a daily struggle for people with. This is daily. It's not just I'm losing my keys once a week and it's frustrating, or every other week. This is a daily thing, a daily struggle. Okay. And so what are the main, since many of them can't get diagnosed in India, and they self-diagnose reading Google, we call it Google Baba because they keep looking at Google and they assume that is it possible that, let's say you're just forgetful? Okay. Mm-hmm. What are the top points that one should look, or symptoms should one have? Maybe 2 or 3 of them, then you can say you have ADHD. What do you think? How does one understand this concept? So that can be a little challenging because ADHD isn't just one thing. Right. So I'm trying to think of an example. There are people with ADHD that are very organized. Okay. They're very organized and they like almost hyper focus on things being clean, and it has to be organized in a certain way. And if it's not done that way, then they can't thinking about it and hyper focusing, which kind of sounds like OCD tendencies. Right. And there can be a lot of overlap between the two. Mm-hmm. So ADHD isn't just one thing, and it can look different with me and the person sitting next to me that has ADHD. It can look a little different. I would say if it is to the point where you feel like it is kind of taking over your life, like it is just a daily struggle where, okay, so I have a friend who, she just wasn't paying attention. She was looking at stuff on Amazon and that she was considering buying. She accidentally bought some things without realizing it, and then subscribed to things that she didn't realize she was subscribing to. She was just looking at it. Wow. Okay. And then added up a lot. I mean, it was like thousands of dollars of cost. And so it's things like that where sometimes it's like we're just not paying attention to
sometimes. Get So, distracted also, they can be hyper focused, they can be forgetful, or they cannot be forgetful. It could be any number of. So what are the basic things that one should look? Forgetfulness, hyper yeah. focus, or distraction, or you're distracted all the time, and it's a daily struggle. Any other symptoms that you would think that an ADHD person would have? So impulsivity kind of where I was going with the money. Impulsivity can be a big thing too. Okay. So be anywhere from risk taking. So Okay. taking a lot of risk. Okay. With ADHD, typically, I mean, we're at a higher risk of having injuries of all kinds because of risk taking. It's like you're not thinking before you're doing. Okay. Okay. Like teenage boys, sometimes Right. they're being takers. They're not doing very smart things. Hmm. And so sometimes maybe they get into more car accidents or have more injuries, more broken bones, more substance abuse. So impulsivity in that area, we are at a higher risk for substance abuse. And that a lot of that can be the impulsivity. Okay. And kind of chasing the dopamine too. So we have the low dopamine levels and we're constantly chasing the dopamine. Right. But not everyone is impulsive and hyperactive either. So yes, forgetfulness is a big thing. Okay. And inattention. So getting distracted and not being able to place enough focus on things that maybe you need to focus on is a big thing. Okay. But a lot of people nowadays, when they want to escape their studies and escape the pressure, they are not attentive in class, not attentive during studies, and they start dreaming or they lose focus. How would you say something like this? And this, would it be also part of the nature, or this is, how would one say when they're just, it's an escapist behavior rather than ADHD? And that's where you really have to be evaluated and assessed, because it goes pretty deep as far as assessments go. It isn't just you show up to your doctor and you talk about your struggles for 10 minutes and then you're getting diagnosed and getting what you need. Kind of a combination of things. There's a lot of questions. If you're reading something, are you able to focus on that, or do you often have to start over? Okay, I don't just read. Right. I just read the paragraph. I don't know what I just read. So you're having to read it over and over again. Okay. That can be a big thing too. It's a lot. There's a lot of questions and a lot of factors that are kind of combined and put Okay. You together. just said that when someone is hyper focused and so organized, it overlaps with OCD, right? So is there a way to tell, or that also needs to be diagnosed? How does one say whether they are hyper focused because of ADHD or is it OCD? There is a lot of overlap with ADHD and OCD, and it can make it challenging to diagnose. Some are misdiagnosed. Okay. So say, okay, yes, very organized, yeah, very clean, very, kind of along those lines. So, OCD. Okay. But it is ADHD. And I think it's 30% of people with OCD also have ADHD. So you can actually have both, which kind of makes things a little more complicated as far as treatment goes. Right. But I would say some of the main differences, like with OCD, you're not going to see the impulsivity and hyperactivity quite in the way that you would with a lot of people with ADHD, if that, or risk taking. So kind of like what I was talking about before. Like with ADHD, sometimes you're not, the prefrontal cortex, which is right, it's weakened. It's not working like it should be. And that's where our planning, our logic, our thinking, that's kind of, some of that is where it comes from. So if that's a little weakened, you're not
it's like you're not thinking before you're doing, you're just doing. Right. And you're doing what you want. Right. So that's not quite what OCD, a lot of people with OCD, most just don't go through that, like the risk taking or doing before thinking it through. Whereas with ADHD, that's way more common. Right. Like the risk taking. You're not going to see that with OCD. Yeah, but I was also, I think sometimes what happens is, since we know that the brain develops by, like, say 24 or 26 or 28, and that's when your prefrontal cortex is fully developed. So isn't it true that when in teenage years, they're also taking risk, and not necessarily it has to be part of ADHD, because they are risk-taking behaviors because your amygdala is more developed and your prefrontal cortex is not? Would you say that also happens? So it will be difficult for a teenager to get diagnosed, or what? So yes, yes, there is a lot of risk-taking, risky behavior because of that prefrontal cortex not being fully developed until 25, 26, 27. I think there's a range. So yeah, we've all done it. I mean, even if you don't have ADHD, Right. you've done, you shouldn't have done. And Right. so, and see, this is still kind of the challenge of answering some of this, because with the assessments, there's such a wide range of questions and kind of a scale from 1 to 10, like how bad is this? And so really go through all of that for each individual and combining it all together. Okay. Got And it. it's genetic too. So most of it is genetic. I don't want to say every single case, but it's highly heritable. So if you're seeing similar patterns with other family members. Right. That also, it's mostly genetic, is it? Mostly. Okay. I don't every single case, but mostly it's highly heritable. So if the doctor sees similar patterns with other family members, or if other family members have been diagnosed, okay, that's would want to let them know. Okay, got it. So what is ADD? So ADD, it's without the hyperactivity. Okay. So I know we were just talking about all the hyperactivity, and not everyone is hyperactive. Right. Okay. So that's mainly the difference between the two. Okay, that's the only difference that there is. That's mainly the difference. Like you're inattentive for sure, but isn't this hyperactivity and impulsivity that is quite as intense as like having it. And then you can have the combined where you're just kind of going through all of it. Okay. So there's the kind where you are impulsive, hyperactive, and inattentive. Okay, got it. And what is executive functioning? I mean, I read up on it. Can you give us what does it mean? So it is a set of cognitive processes that involve, so I kind of mentioned the prefrontal cortex already. So like the planning, logic, thinking things through, working memory, planning, why a lot of us can be such chronic procrastinators. Right. And it's not procrastinating on one thing or procrastinating every now and then. It's like you're always procrastinating, and it doesn't matter how many times you wait until the last minute to write this 10-page paper, and then you're doing it overnight. It's just like you keep doing it. So like the planning aspect of it, that's why we're such chronic procrastinators. Okay. Do you think social media has any role to play? I know you said that it's partly genetic, but is it also because they are like opening so many tabs? They're just skipping from one thing to the other, just scrolling all the time and getting that dopamine hit all the time. Does it affect ADHD
in any way, do you get it because of that, or it's just a byproduct of it? What do you have to say about that? So I wouldn't say that you necessarily get ADHD, but that is something to definitely consider in today's world. I mean, even think of TikTok. It used to be where it was 15-second videos, right? I believe it was. And so, I mean, you're just constantly scrolling for the next video. And some people can't even sit through like a half-hour YouTube video. They're like in 5 minutes and they're like, all right, I'm out. Right. Like it's people are having a hard time sitting through anything. Right. So it is an issue for sure. And I think that's something to consider. There are people that think they do have ADHD and they don't. Right. True, because that's basically showing that you're not obviously focused and you're hyperactive and you're basically scrolling from one app to the other app to get that hit, and you're constantly juggling different apps and different videos. So it doesn't, people who are watching, just because you do that doesn't mean you have ADHD. The recent thing happened that somebody we know on YouTube said that he had ADHD. After that, I got so many messages, ma'am, I think I have ADHD. So even like one small thing, or if they are doing this, they automatically, and for them, if they are not focusing, they're not realizing, like you said, if they enjoy something, suppose you and I enjoy something, and we are focused any which ways, right? And we understand, but they are, either they have taken too much on their plate, so they're escaping that whole study thing. And then they say, okay, I have ADHD, I cannot focus. But they don't realize perhaps it's not the subject that you need to, that you understand, or something you like to do, and you're just escaping it. So this is the problem in today's generation. They use Google and they see a couple of symptoms and they're like self-diagnosed, and then they use it to not go forward in life. They say, okay, I've got it. So many a times when someone writes to me, I say, self-diagnosed, or have you actually gone to a psychiatrist? 99% of them have not gone to a psychiatrist. Or so, do psychiatrists or psychologists ADHD, who diagnoses it? Can they both? Primary care doctor, it can be a psychiatrist or a psychologist. It depends on the country too. So that's how it is here in the US. I don't know how it would be in India. No, a psychologist can't prescribe medication. Right. That's true. But it can go through the process of assessing and evaluating. And, like I said, it's a lot of answering tons of questions and talking with the patient and kind of piecing things together, listening to the patient on what is going on. So like I said, it can be, I can't seem to get through a book. I'm constantly procrastinating. I'm always losing my keys. I can't pay attention when I'm in class. I can't pay attention to my bank account. So it's like I'm getting these overdraft fees, and then I'm in the hole, and now I'm in all this debt because I'm constantly swiping my credit card along with it. And you have to also listen to the patient and talk to them about what is going on. Go back in childhood, back in childhood. How were you in school? How did you do in school? All the way up to now. And so the doctor should, maybe not every doctor does. I'm sure there's doctors out there that just, you're in and out in 10 minutes, and that's not the way it should be. That it should be very thorough. Okay. Really listening to the patient and spending time with them. Okay. So doing a thorough assessment. You're saying that when they're getting diagnosed and look at the childhood, is it possible that someone in childhood didn't have any issue? Okay. But as they grew older, all of a sudden they get ADHD. Is it possible, or do you see symptoms from the time you're young? Typically it does. Yeah, typically it is starting when you're young. Okay. So you can have a late onset, or something can happen later in life, like if you have a traumatic brain injury. Okay. That would be the exception to the rule, right? Suppose brain injury is different, but generally you would see in someone's personality from the beginning, right? Yes, but that doesn't always mean that they're going to get diagnosed. They could get diagnosed later in
adulthood, because maybe they just went under the radar. Right. Because kids are fidgety, they anyways talk a lot, they're generally not focused when they're doing, so it's difficult to diagnose younger children. I would say a lot of kids are diagnosed when they're kids, especially boys, because boys are a little more, I'm trying to think how to word this. They can be more hyperactive and disruptive in class. As girls, it does typically present itself differently. Now, not every single girl, but I would say most girls, they're more of on the inattentive side. Okay. So they're being disruptive. They're doing what they are told. They may be fidgety, but it's not to where everybody notices and sees it. Maybe they're just tapping their foot a little bit or messing with their hands or fingers in some way. Okay. Whereas most boys, it seems to be much more obvious. Like it's not just something quiet. It's a little more out there. So girls, unfortunately, have gone under the radar. And that's why you're seeing a lot of women getting diagnosed later in adulthood. Got it. So what is the general percentage? Do boys have more ADHD or girls? Is there like a certain research which has been done? So boys are typically, yes, more boys are diagnosed, and especially in childhood, because like I said, more hyperactive and impulsive and maybe disruptive in class, whereas a lot of girls, not so much. Right, got it. But yeah, sure. There is a lot of research that is showing that there are some boys that have been diagnosed with ADHD in childhood, they didn't actually have it. They were just like rambo boys. Right. And then girls are not being, there's more women out there, more girls out there that are not diagnosed. Got it. So over-diagnosing with boys, and then we're not diagnosing enough with girls. Okay, got it. I kind of get what you're saying. And so let's talk about treatments. Like you said, diagnosis has to be like a lengthy questionnaire to completely encompass your life and what you've been doing for years. It should not be like a 10-minute thing in case people, because sometimes I'm not blaming any psychiatrists in India, but generally there are so many clients are like, okay, I think you're doing this, you're diagnosed with OCD, you're diagnosed with bipolar. So can you tell what should be the amount of questionnaires, or how many visits do you think it takes to finally understand, do you have ADHD? Have you diagnosed anyone? How do you do it? What's the process like? Everywhere. It can be different everywhere. I know with our son, yes, me as well. These assessments are pretty lengthy. Okay. I'm trying to think how many questions. It's well over 100, if not like closer to 150, 200. And then you have some areas where there are kind of open-ended questions. So tell us, how did you do in school? Something kind of open-ended, and you have something where you can write or type in. So you're kind of giving your story. Right. So it's not just, okay, on a scale from 1 to 10. Right. How often do you procrastinate, or how bad is this? It's not just kinds of questions, but they can be open-ended where you're kind of telling your story and your struggles too on a personal level. Okay. Got it. Now there are areas, other things with the assessments where I know with our son, they had this computer up. And it was I'm trying to think how to explain this. So they would say, okay, hit the space bar if you see an uppercase letter, or if you see the letter B or L, hit the space bar. And so it would go at different speed. There would be all kinds of letters. There would be one
up in the left corner, in the middle, and it would kind of be all over, but at different speed too. So sometimes you would see two letters like just a second apart. And then sometimes it would be a few seconds apart. Sometimes it would be 7 seconds. So it's like, okay, in those, let's say 7 seconds between those two letters popping up, like how well are you paying attention? And are you hitting the space bar because you're just seeing any letter? And I noticed our son, he got very frustrated with that, because sometimes he would just hit the space bar and he's like, oh, I wasn't supposed to do that. And he would realize it right away. But, he's just pressing the space bar just to do it. It's just kind of false. And so that kind of measures your attention. Okay. And so there's things that some doctors also do as well to kind of measure your attention span. Okay. So what is the treatment for ADHD? What does one do if they have ADHD? So there are medications, and I'm sure everyone's heard of the stimulant medications like Adderall and Ritalin and those kinds of medications. There's other types as well. Some do well with antidepressants, don't do well with the stimulant medications. Like it actually makes them feel worse. Okay. And to watch out for is with OCD, typically stimulants will make OCD worse. Right. So that's something to watch out for as well. So yes, definitely medication, but some people don't want to be on medication and they want to try to go more of, I guess you out. So when we take these medications, if you know a little bit, do you know how does it impact your brain? These medications, how does it help with ADHD? How do antidepressants work, or how does the stimulant work in this manner? What happens in the brain? So we actually did a very thorough podcast, and it's in my Instagram too, where we brought on a psychiatrist. Okay. Go through the medication. Okay. And it's pretty deep. And I mean, I learned quite a bit just from him. Okay. I mean, I can answer very basic questions regarding medication, but because I can't prescribe medication. Okay. So maybe I'll contact him for a deeper understanding. What is your basic understanding? You can just tell us that, if not deeper. So the stimulant medications, a lot of them, they do help with increasing the dopamine. Okay. And that's what they do. And the antidepressants, depending on what they are, they're considered the reuptake of, like, a lot of it is with serotonin. Right. So some of that helps with the serotonin. There are some that help with the serotonin and norepinephrine. Okay. And so it depends what the doctor thinks is going on and what they want to prescribe. Always pay attention to how you're doing and how you're feeling, though, because, like I said, everyone wants to think of Adderall and Ritalin when it comes to ADHD, but there are some that don't do well on that, and it does make them worse. Right. There are lots of clients who come to me and they say they start antidepressants and then they feel very numb. They were better off without those medications, and then they need to switch. They don't understand that each one reacts differently to every medicine, right? You need to switch and see which works for you. Absolutely. I know for the longest time I tried antidepressants. When's the last time I was probably in my early 20s, or probably early 20s, before I tried like my last one. And I'm like, okay, this is obviously not what I need. It's not what my brain needs. It's making me feel like I'm going crazy. Right. I would be okay for like the first couple of weeks, and then I would take a sudden nosedive. And then I'm anxiety, and I'm irritable, and I'm crying. And it was so crazy. And, for some, it's life-saving for them. It really is life-saving, but for some people, they can do worse on it. And you got to pay attention to, maybe ask some
close family or friends to, I mean, yeah, I guess kind of pay attention. Or if you feel like maybe you've changed a little bit, I don't know, talk to your friends and family. Like, is there anything you're seeing that's a little concerning since I've started this? Because I'm kind of feeling like I'm more anxious, or I don't want to go out as much, or I feel like maybe I'm a little more depressed and I'm not sure what to do with that. Okay, got it. So let's say we don't want to take medications. What you had told me that there are many other tips you can give to help with this. So what does one do if they have ADHD and they do not have access to medicines, or let's say they don't want to take medicines? What are your tips that you can give to everyone? How can they bring it under control? So one of the best things you can do for ADHD, and I know that a lot of people don't want to hear this, but it is exercise. Right. And the reason is that when you're exercising, it helps increase that dopamine and it helps boost that blood flow to the prefrontal cortex. Right. Where you need that help. Right. Like I was saying before, it is a wonderful thing to do to help with the prefrontal cortex as far as boosting. Now some may listen and they're like, okay, well, I don't exercise. So now I'm supposed to go and run for 30 minutes every day. No, I mean, start slow, Right. start slow and build habits. That's another thing with ADHD that we can have trouble with, is building these habits, because we go all in thinking that this is what we're supposed to do. And then it kind of backfires on us. So start slow. Start with just going on a 5-minute walk. Right. Building from there. It is one of the best things that you can do. Your diet can really, really help. Okay. And I feel like a lot of us were reaching for the simple carbs. We're reaching for the muffins and the cookies and sugar and that kind of stuff. And that gives us that quick dopamine and serotonin, but then it's going to really dysregulate, our blood sugar. Right. And it's going to crash quickly, and we're going to keep reaching for that kind of stuff. So eating consistently throughout the day can help with that, can help balance out the blood sugar levels. Okay. And protein. Okay. Eating protein consistently throughout the day can be helpful. That helps with boosting alertness as well. So if you have a hard time eating, or if you forget to eat, I know a lot of people with ADHD, sometimes they just forget to eat. So have something out on the counter. It can be walnuts or peanuts, maybe cheese sticks, having an apple there. If you're having a hard time with making food, have something like that just on a plate where you're just grabbing throughout the day. Right. The protein is very helpful. Having healthy fats, that's good, are made of 60% fat. Right. And so our brains actually need fat, but it is the healthy fats that we need. So there is a lot to say about fish oil. Right. With omega. Give it some time though. It's not going to be an overnight thing, but right. Give it some time and take it consistently. Avocado oil, coconut oil, olive oil. And it's pretty simple to do. If you're having a salad, just it's a very small amount. You don't need a whole lot. Let's say olive oil. Right. Just kind of drizzle over. Okay. And eat it. So healthy fats are very important. And I do want to say that, yes, we shouldn't be reaching for sugar and the simple carbs all day, every day. Right. And I know some think, well, then I'm just going to not ever eat it. I guess I'm just going to get rid of all the bad stuff. But again, that's probably going to backfire because you're used to eating a certain way and then suddenly you're changing drastically. Right. It's probably to backfire. Okay. So just slow steps. I usually say focus on adding more of the healthy stuff than focusing on what you shouldn't have. Right. Because if you're thinking more of what you can add
inevitably it's going to balance itself out. That's a good tip. Actually, yeah, we all the time keep looking at what we shouldn't be eating, and you binge eat after that because you're missing it so much. So Yes, exactly. And there's other things too, like meditation. There's a lot to say for that with research. And again, for a lot of us, we get those racing thoughts or we get distracted and it's hard for us to relax. So we could be doing it once and we're like, okay, that didn't work, so I'm not going to try it again. Give it some time. Sometimes we have to give it time and we have to almost learn. We have to learn how to calm down our thoughts. And that can take time to learn how to do when your brain is just like a race car in 100 directions. It can take time to calm down. True. I mean, meditation and yoga are really great for that. So or even puzzles. Sorry, go ahead. Sorry. Yeah. Even when I tell my clients, that's like top of the list: exercise, meditation. They're like, we cannot control our thoughts. I said, you're not supposed to. You're not a yogi sitting on a top of a mountain and you're blank. It's not going to happen. You just need to breathe in, relax. Even if thoughts crisscross, it's teaching you to be calmer. Because we are on the go all the time. We cannot sit still. That's a very difficult thing for today's generation, including us. As soon as we're doing something, we'll take the phone and we'll do something, so not just the teenagers and the youngsters, even we need to learn to kind of relax. We do, and start small. There you will hear people out there, yes, I meditated for an hour straight, or 3 hours one day, and you think, oh, that's what I have to do. Start small, 5 minutes. Start with 5 and go from there. True. And you were saying something about puzzles before we were discussing meditation. So say that again, I'm sorry. Puzzles. You were saying something about puzzles. Oh, so like crossword puzzles. Okay. Or along those lines, something that can kind of challenge your brain a little bit can be really helpful as far as keeping the brain sharp as well and helping with the prefrontal cortex in general. And even doing things, you can do this with your kids where they're called neurobic exercises, where it's kind of like exercises for your brain that your brain isn't used to. So even something as simple as, okay, so I'm right-handed. Okay. Brush your hair or brush your teeth with your left hand for fun. Or just doing anything that maybe your brain isn't quite used to, or even like tell your kids to close their eyes, okay, and maybe smell different herbs, like, well, what do you think this is? What do you think that is? And it can be kind of fun for, everyone to do, but it's something kind of fun for kids, especially because it's funny. If you're trying to do something different with your left hand, it can be kind of funny to think like, oh, I can't do a whole lot with this hand, but it's doing more for your brain than what you think. Okay, got it. So these are any other tips that you can give? Is there any app that they can use, or any place that they can get diagnosed without it charging a bomb? Is there a place that they can reach out to? So again, it depends where you're at. In India, it sounds like do doctors ever diagnose it or prescribe medication? Sure they do. There was this comment, I'll just read it to you, that someone says, yes, ma'am, my psychiatrist did diagnose me with ADHD, and he said that I have inattentive type. I was shocked at first, but now I also see the patterns. So yes, they do get diagnosed, and depends. I think the village and the town, it's going to be difficult, because as it is, mental health is stigmatized. And so maybe the cities, the more upscale towns, perhaps they do have psychiatrists who can. But this also, actually, this comment made me think, suppose they have been diagnosed and they have been given medication. So can they ever stop, or is it like forever that they need to take? Because now this also makes me think that once you've been told that, like, let's say this guy has been told you have the inattentive type ADHD, right? So he's going to go through life thinking and
saying that, okay, I have this, now it can't be fixed. What do you have to say about that? Some people may have to be on medication for a very long time. Some do eventually try to come off of it once they implement other things into their life. So like I said, with the exercise or fish oil, bringing in those omega-3s and healthy fats, trying to maintain a healthier lifestyle or taking other types of supplements. Once they kind of feel like they've implemented enough, sometimes they will try to come off the medication. And of course, talk to your doctor before you do anything like that medication. But yeah, it is a lifelong condition. It is a lifelong condition. So, but medication isn't always just the answer. Like you can take medication and you can do all kinds of other things to help with the ADHD as well. So I know people that they were on, so let's say they were on a higher dose of Adderall, but now they've done all these other things along with it. And so they've been able to back down to a much lower dose because they've done all these other things along with it. And so they don't need that higher dose. They're just down to the lower dose. And then maybe someday they will just come right off of it altogether. Right. So since the main thing is that they are, not, they are inattentive and they are hyper. And so do you suggest that what these kids nowadays do is keep so many tabs open? Do you think if we learn to discipline ourselves that, okay, I'm going to like every day set aside kind of a goal that I will sit through this. And do you think that can help scheduling, getting your life more organized? Would that help? I mean, if they are not the organized type, I'm talking about the disorganized type. I think it can help. There's the nature nurture aspect to think about. I mean, we are born with our DNA and our genetics, and it's very, very powerful, but so is our environment. So one thing that I think of with myself, that it's very common for people with ADHD to be late. Okay. Like late to appointments, late to class. It's very, very common for that to happen. So when I was a kid, my mom, and I think she also had ADHD, to be honest, I really do. Now, there are family members on my dad's side that have it, but I do think maybe my mom had it too. But she really instilled in us to be on time, and not just be on time, but plan on being there a little early in case something comes up along the way. And so that carried on into adulthood. And that doesn't mean I'm not ever late. That doesn't mean I'm 5 minutes down the road and I'm like, oh gosh, I forgot something, of course. So then I got to turn back around and, whatever. But I mean, that's a perfect example right there with environment. It's like, okay, most people with ADHD they're chronically late. Right. And I would have been too, but I do feel like maybe growing up with my mom instilling that in us, I think that kind of environment really did help kind of carry that into adulthood. Okay. Actually, Indians are very famous for being late. So then I would say almost the entire country has got ADHD because they have no sense of time. They don't understand, most of them, I'm not saying everybody, but quite a few Indians are known. It's called the IST instead of calling Indian Standard Time. It's like they made their own time. Like whenever they feel like, and even like Indian goodbyes are the longest, they stretch like a mile long. So concept of time is lost on most Indians. And I'm extremely punctual, whether it's my appointment, whether it's my podcast, I'll always be before time. So whoever is watching, doesn't mean that because your parents have not instilled, you to be punctual, or you don't reach anywhere on time because you're just sheer lazy, or you're just one of those people who doesn't understand how to respect time or respect other people's time, doesn't mean you have ADHD. Now, this is the problem with today's generation. So now what will happen, because you said they are perpetually late, all the people who are late,
they'll say, okay, I have ADHD. This is what I've been diagnosed with. So you need to work on yourself. Only this particular point doesn't mean you have ADHD. Correct, Brittany? Correct. Yes. And I guess I have a question for you, I guess, just as a culture and society. So if a lot of you tend to do that and be late, is it more acceptable because everyone, or not everyone, but a lot of people are like that? So is it acceptable to be late, or do people Very normal. Yeah, it's very normal, especially for Indian get-togethers. If you have to get someone to come at 9 o'clock, you tell them 8 o'clock because you know they will come by 9. It is like assumed that they are going to reach anywhere, and almost all of them, they're like, okay, they don't like set, like I have this set thing that, okay, I will time, like you said, right? We time ourselves. This is going to take, the journey is going to take that much time, dressing up will, so we work backwards, right? This is the amount of time. There is no such thing in most of them. So everyone, even Jakarta itself, Indians are very famous for being late everywhere. Okay, they're not like from Switzerland, right? They are so punctual. And here, so I kind of have learned to live with it, but I don't like it per se. Like you'll see, I'm very particular. I'm like, okay, if you tell me the exact time, if I have to get up, I will tell my family members, what time do we have to leave? Tell me exactly, I will get up on that time. But people are not like that in India. Most of the time are very relaxed. They'll say, okay, we'll go ahead. So it is not ADHD, it is just a cultural thing. I wouldn't have guessed that about India. And, I've never been outside the US. I would love to do that someday, but I would have thought that, I don't know, maybe, I don't know, they were punctual and not late, or maybe they were a little more strict about that. I don't know why I think that, but I don't know why I would think that. No, instead it's the opposite. And if it's the women, they take longer to get ready than the men. It's like a common cultural thing in our, because we women have to wear the Indian sari and, do our hair and all of that. So generally, men get ready, dressed before, generally, not always. So some women get ready quickly, but in India is generally the case that, okay, our wife, if any place we go, why did you come late? Oh, my wife was getting ready. So that's right. Yeah. Right. Yes, it's common here too. It's mainly the women that. Yeah. So, and even our dinners, okay, people laugh at me because as an Indian, I eat very early. By 6, 7 o'clock in the evening, I'm done with my dinner. Indians eat after 9, 10, 11 o'clock at night. Okay? Really? Yeah. Okay. And even parties. The worst thing is parties. Okay, so you go, first there are like 10,000 appetizers, because we Indians generally like to feed people. We like to eat and we like to feed. So if you go to most Indians, I will not say, some are very miserly, but most Indians, you'll always see 3 to 4 appetizers. Okay, that will start around 9 o'clock. Dinner will be served at 11, 12, and then the women will eat first. I'm talking about my society. In India, it's a slightly different case where the men eat before the women. Depends on which cultural upbringing you have. Some of them believe that, okay, the men are supposed to eat first. But in our culture, as in the so-called society, we women eat first because the men are busy either drinking or something. And they're like, we don't eat now, we'll eat later. And gets dragged. So dinner is served twice. One for the women and then for the men. So it's a very interesting concept that we eat very late. So what time do you typically go to bed? I'm, as I say, you cannot call me a normal Indian because I'm very finicky about my food, about my sleep. And anytime I go to a party, I'll be like cribbing. I said, please serve early, because I even have reflux. So if you feed me at 12 o'clock at night, there is no way I can sleep that night. I will be like taking antacids and all of it. So what I do, I either eat early, or then that night you just have to take medication before you sleep. Like whenever we have dinners, every weekend, dinners are only served after 11, 12 o'clock at night. So it is like a given. I'm going to have an acidity attack because the food it's not always spicy. It could be, but it's very heavy.
to eat and sleep right away. We come back home by like 1 o'clock or whatever. But even in India, people don't eat before 9 o'clock. Like a lot of them, only after 9, 10, they have dinners. Yeah, It's interesting. Yeah. That's Yeah. Okay. I wouldn't have guessed. I didn't know that, but I love learning about even people in other areas in the US. Like it can be different. And I don't know, when I hear something that's a little different, I'm like, wow, that's really interesting. And I just love hearing all of that, I guess. So you don't have any Indian friends over there? Any what? Any Indian friends? Have you like made any Indian friends? Have you met any Indians? Yeah, I guess, yeah, maybe most of them have lived here their whole lives though, or most of their lives. And so I feel like a lot of them haven't talked about Okay. in general. So yeah, I don't know. Mainly my age though. So it's like around my age. So like I said, maybe they've lived here most of their lives. And Right. And where is Indiana exactly? I've never been there. I have some family in the US, but you said you're from there, right? I'm in Indiana. Yes. Okay. Where can you tell me where is it? Which is it close to New York, Florida? I know like this. So Las it's Vegas. Yeah. part. It's in the Midwest. Like Michigan, that lake that's kind of coming down. Right. And in the northern part of the US, you see that body of water, long body of water coming down. I'm right by there. Okay. And then I'm in the northern part of the US, so it's in the okay. Chicago is that a lot of people know where Chicago. Right. Oh, Oprah Winfrey. Okay, Chicago. Okay. I'm an hour away from. Okay. Got it. Because I have a lot of family in the US. My elder brother is an American, by now an American citizen. And I have my uncles, my father's brother, father's sister. All of them are based in New York, Florida, Washington, Houston. So when I visit, it's a headache to go to the US because one would think that, they're like all close by. But when you sit in a flight or you drive, it's by the time. So what I do is when I go, I call all my relatives. I say, all of you will come. I cannot come every city or state. Even we have family in Frisco. So it's so difficult to travel in the US. Oh, so they're all over. I've never been to California, Texas, New York. Wow. I have to go to myself. Why? You live right there. I mean, why would? I don't know. I've been to Florida. Okay. You have to go to New York and Vegas. These are the two main places which I love about America is New York and Vegas. Other places are like Houston was okay, Frisco is nice, LA, Frisco, these are the main places. But whenever I go, I have to visit New York and Vegas. So it's a lot of fun because I'm a city person. Yeah. It's different. Like the areas are just different. Wow. You go here and it's one way, but then you go in another part of the country and it's a little different sometimes. Right. And when I visit my brother in Washington, you see, we live in Asia. So all our work is done by staff. So when we go to the US, we are like literally, cleaning the cup, making our beds. So it's such a cultural difference when we go from here to there. Yeah. So I always tell my brother, I said, what have you called me here for, a holiday or to do your work? Because so then he gets up, he makes my breakfast, he'll help me out because we are not used to it. We're like sitting here and we're waiting for our breakfast. He's like, get up from here, you have to do it yourself. So we're not used to that kind of culture. Oh. Yeah. Oh, wow. Yeah. So I hope you'll visit sometimes if you ever travel. I'm going to move to Dubai. So in case you're there, do look me up. You have my WhatsApp. Absolutely. Yeah. I'll take you around and I'll get you to eat Indian food the right way. Yeah. And I know people that have gone there before and say really great things. So it was really lovely talking to you, Brittany. It was fun. There was some lag. That's why I think we were overlapping and talking and you couldn't hear me. So sorry about that. I think Oh no, I think it was on my end. We've had severe weather since last night. And I think it's kind of messing with the
Wi-Fi a little bit. So I was a little afraid of that, getting a desktop. I was afraid of the power going out, to be honest, but the phone worked out okay. So Yes. I wanted to add two more things before I forget. So a supplement called L-tyrosine has been shown. L-tyrosine. Okay. L-tyrosine. It's basically a precursor for dopamine. So it can really help boost that. And there's research to support that it can help. Okay. And another thing, I don't know if anyone, have you heard of the term body double? No, I haven't. No. Okay. So a lot of us with ADHD, we seem to do a lot better when there's another person. And so kind of like an accountability buddy, sort of. Okay. So to, if you feel like you can't get things done on your own, or you feel like you do better with someone else there that's kind of helping you stay accountable, helping them too. Like it's kind of like you're helping each other. Don't hesitate to do that. There's nothing wrong with doing that. I notice with myself, I'm 100 times better. Right. When accountability from someone else. Right. So I have this Discord. So I have my own server on Discord, and we have 3,000 people on the server. It's a virtual support group. And what I have done, even for studies, I have made different groups so that people can sit together and study, as you said, accountability partner. So we have split into different streams. That way they can find someone who they can study with and they will do better. So we are already implementing in that kind of way so that they can focus better in their lives. And even it's like a virtual support group. So whether they are going through ADHD or heartbreaks or whatever, there are different channels that we have for people to express themselves, talk to each other if they're feeling lonely. And yes, they study together. So different streams we have made. This is mostly for Indian students, but now recently I had a client even from Australia. So it's very interesting. That's awesome that you have organized that and put that together, because so many need that right now, especially with the past couple of years with a pandemic and everything. And that's a wonderful thing that you've put together. Thank you so much. Anything else I didn't ask you? Is there something you would like to share before we end the session? Let me look. I'm just going to look through. Oh, I would like to say too, make sure you aren't suffering with any nutritional deficiencies. Sometimes, we can be hyperactive, but we are so exhausted too. And that can be due to a lot of reasons, and maybe going through sensory overload quite a bit and everything. Making sure that you don't have any nutritional deficiencies is very important. So even take iron, for instance, like that is necessary for making dopamine. Okay. And so if we're low in iron, that one mineral, that can make us feel exhausted. But yet we can't sleep and we can't focus, and there's brain fog. And sometimes there can be nutritional deficiencies that are kind of causing symptoms of ADHD or making it worse. Right. It is very important. I think it's very, very common for people to have nutritional deficiencies. And so I do think it's very important to address that, to make sure there isn't anything going on. Okay. I think two people have questions, but I would like to see your video before I will not unmute you till I don't see that it's a proper person. If Raj, it's you, and Megha, it's you. We have had some people who spam my Zoom. I need you to switch on the camera. I'm on spotlight. You will not be visible. If you have questions, either write it on YouTube. The chat here is closed because you know what happened last time. So if you're raising your hand, either tell me, Megha, you have my WhatsApp number, text me there. And Raj, if it's you, then text me on Insta that it's you, or switch on your video. Otherwise, I'm not going to take any questions. Only after the guest leaves, I will take the questions. Because I think you know what has been happening lately. And if you people do not switch on your camera, sorry, I'm not taking your questions. Okay, somebody says which mineral and vitamin, that's what you said. Iron is important, omega is important. And there was another one. Would you perhaps give me a link later
to the new supplement which you said, which is like good, so I could easily post it. Yeah. The Tyrosine, is that what? That one, I think they're probably meaning that one, the L-tyrosine Right. supplement. Okay. Yep, I can. Okay. And anything else, any other resource that you think that it can help, I will post it with this podcast, so it will help a lot of people. So I think some resources that are great to look into, it's called Attitude. It is ADD. So it's like attitude, but it's actually 2 Ds instead of 2. Okay. Maybe I'll take the link from you later, then I can post it along with it. Certainly, just go ahead and get some links together and send it to you. Perfect. And you get it organized however you would like and everything. So yeah, absolutely. There's a lot of good and reliable ones too. Thank you. Thank you so much. Really appreciate it. It was lovely talking to you, Brittany. Thank you for being here. And I hope that your life is wonderful and blessed and you're happy, and so is your son. You too. You too. Thank you so much again for giving me the opportunity to come on. And if there are any questions, I can help address some. If I get some, I'll send it to you. Yeah. Awesome. Thank you so much. Thank you. You have a great day. You too. Bye. Thanks. Bye. Okay, so I can see that this person always, whoever spams me, comes up with the same names who are there on my YouTube. So no, you are not going to be unmuted till you do not show me your face. Or I think if it's Megha, she has my number. I think it's the other person, because by now Megha would have WhatsApped me. So please buzz off if you're that person, you know who you are. So okay, in village. Hi everyone, sorry, मैंने कुछ questions, I hope मैंने छोड़ा नहीं आप लोगों के questions. Okay, you have been काम करो लॉन्डो, elevate your life. कपिल शर्मा, एक तो दूसरों के lines मत use करो, सिर्फ काम करने से इंसान अगर से अपना दुख और दर्द भूल जाता तो फिर क्या बात थी, और 24 hours कोई काम नहीं कर सकता. That is not the, by running away from your heartache, from what is happening in your life, is no way of let me check my एक minute. Okay, so acha Megha. Okay, oh okay, so then okay, मुझे कैसे पता चलेगा? We have to have Megha, तुम you can unmute if you want. Okay, this I gave you unmute. And Raj, if it's you, you know where to text me, DM me on Insta, because I am going to be very strict and I cannot deal with this. And Gaurav, agar it's you, then you will have to also DM me on Insta. Otherwise, I'm not unmuting you. Okay. Megha, you might talk if you feel like. Okay, let me read. Okay, ma'am, open chat, it's me. Okay, fine. यार कैसे chat open करूँ यार, तुम लोगों ने ना सरदर्द दे दिया है माँ की यार. Okay. ओके, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो राज? लास्ट टाइम तुम मुझसे बात भी कर रहे थे ना. तुमको प्रॉब्लम है क्या अनम्यूट करने में? अभी चैट ऑन किया, अगर से तुम लोग को क्या अगर से कोई इशू है तो बैन कर देना उस इंसान को. ओके, कैसे हो तुम लोग सब? गुड टू सी यू ऑल, लॉन्ग टाइम नो सी. हाय मेघा, कैसी हो? गुड इवनिंग मैम, हाउ आर यू मैम? आई एम ओके, आई एम डूइंग, एक्चुअली आई वाज नॉट ओके क्योंकि मैं बाली गई. मैम, बाय आई सी वॉइस एंड योर फेस, आई assume that you're not okay. या सो क्या हुआ था कि Anything really, yeah. Raj, if it's you, why can't you just text me on Insta? तुम लोग थोड़ा दिमाग यूज करो ना. अगर से तुमको 4 बार इंफॉर्मेशन देना पड़ता है, इंस्टा पे तुम हो ना मेरे साथ, तो इफ यू टेक्स्ट मी फ्रॉम योर इंस्टा, अच्छा यू आर नॉट दैट राज, देन विच राज आर यू? हे भगवान, देन विच राज? देखा, दिस इज द प्रॉब्लम. मुझे चैट ऑन, सो आंट यू द अदर राज? हाउ मेनी राजेस आर देयर? एनीवे, फक इट. सो मैं जब बाली गई थी तो एक दिन मैं I went to this hill station, sort of like where the active or semi-active volcano is, and it's like super cold over there. मैं गई और इतनी ठंडी थी. मैं एक तो जकार्ता में रहती हूँ, हमको ठंडी की आदत नहीं है, ठीक है? तो
I caught a cold from there. And पहले 2 बार तो मैंने ब्लॉग या फ्लैश ब्लॉग पता नहीं मैंने क्या बनाया वो तो कर दिया. उसके बाद जो मैं बीमार पड़ी, like I just could not, I had such a bad cold, headache, acidity attack, पता नहीं रोज लेट खा रहे थे, दिन में 3-3 4-4 मील्स हो रहे हैं. As you can see मेरे चीक निकल आ गए हैं from the time I've gone and come back. So it's been like crazy. And how have you been, Megha? तुम कैसी हो? क्या चल रहा है लाइफ में? Yes, ma'am. You're fine? Okay. अरे क्या हो गया? तुम फिर से same study thing. Ma'am, open chat. It's me. Okay. I did open chat. I don't understand if which Raj is there. I'm using. Oh, okay. I'm using fake names so troller don't know any. But who is it? Like I don't even know your real name. Okay, बाबा. अच्छा जो भी है कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो फालतू में हम लोग टाइम बर्बाद करेंगे अपना लाइफ में. ठीक है? Ma'am, हाँ. क्या क्या क्या? I can't hear you. What? I got disconnected, ma'am. I think network issues over here. हाँ हाँ तुम्हारा नेटवर्क इशू है. That's why I got disconnected. Hi Anonymous. Hi Raj. And Clearly. sorry what? Ma'am, voice clearly. हाँ तुम्हारा बिल्कुल क्लियर नहीं है, कट कट के आ रहा है. अच्छा लेट मी आंसर द क्वेश्चन. किसने क्वेश्चन बोला अबाउट, किसने किधर लिखा, किधर रखा, किधर लिखा? हाँ पॉली लॉली, कैसे कैसे नाम रखते हो तुम लोग भी ना सच्ची. तो देखो अनफॉर्चुनेटली तुम लोगों की ये जो जनरेशन है इसमें आप लोगों को ऐसा हो नहीं सकता कि हर इंसान को आप पसंद करोगे और हर इंसान आपको वापस पसंद करेगा, राइट? ऐसा बहुत मुश्किल से होता है. एंड मैंने पूरा एक पॉडकास्ट नहीं, एक साइको एजुकेशनल सेशन बनाया है और उसमें मैंने बताया है कि मुझे ये टर्म रिजेक्शन से कितना गुस्सा आता है, क्योंकि तुम कोई चीज नहीं हो, कोई फालतू का कमोडिटी नहीं हो, कोई कचरा वाला कपड़ा नहीं हो कि तुम्हें कोई रिजेक्ट कर सकता है. मैं बार बार बोल के थक चुकी हूँ. स्टॉप टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ लाइक यू आर some crap that somebody can just chuck. You are not. Okay, so what if that girl said no? इतने सारे लोग हैं लाइफ में और फॉर ऑल यू नो देखो हर इंसान को दूसरा इंसान पसंद नहीं आ सकता. जरूरी नहीं करके आपको कल को अगर से आप किसी लड़की को पसंद नहीं करते पर वो लड़की आपको पसंद करते, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे यार आई एम नॉट रिजेक्टिंग यू, आई एम नॉट, यू आर नॉट सम शिट दैट आई एम सेइंग नो टू. It's just that we are not compatible. So look at it that way. Even today, you know, I had a case, somebody who's been in relationship for 6 years. 6 years, okay? It can be a problem. Then someone came, आज जिनका रिलेशनशिप 6 महीना चला और 6 महीने में फिर उस लड़की ने बोला ओ आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट, अब मैं किसी और को ये कर रही हूँ. सो हाँ, so basically you have to understand that this is how life is, this is how we are going to be and this will make you stronger. डरो मत. सबसे ज्यादा हमारी इंसानों की यही प्रॉब्लम है, हम लोग दुख से इतना यस प्लीज आस्क मी, दुख से इतना भागते हैं यू नो, और हर टाइम हमको हर चीज हमारे तरफ, हम जो चाहेंगे वो कैसे ऐसे हो सकता है? हाउ कैन यू गेट एवरीथिंग? इफ लाइफ वुड बी सो इजी देन क्या बात थी, हम लोग कभी दुखी नहीं होते. बट दुख से हम लोग बहुत पीछा छुड़ाते हैं, बहुत. ये टेम्पररी है, दिस इज अ टेम्पररी सेटबैक. यू विल गेट बेटर, यू विल फील आफ्टर सम टाइम. थोड़ा टाइम लगेगा, आपको बुरा लगेगा, पर आप अपने आप को बिजी रखें. और मेरा just contact me, I'll give you the entire resources to overcome this, because it's not all the resources are not there with the heartbreak session that I did. Okay, okay, I need to, yes please ask me the question. Somebody else also has asked me the question. मेघा तो आते जाते रहती, एक सेकंड. क्या संदीप महेश्वरी sent legal notice to Prakhar for using Indian flag on his graduation ceremony? What is your take? ये लो आ गया और एक क्वेश्चन. मैंने एक बार नहीं, मैंने आई थिंक 25 बार तो बोल दिया होगा अभी तक पॉडकास्ट में. I have nothing to do with this controversy. I will not take any sides. I have nothing to say.
जिसको जो करना है करे, जिसको नहीं करना है ना करे. This has nothing to do with my work. I don't like to give. Yeah, controversy has started again because people like you make it controversial. You people want to talk about it, bitch about it. This छोड़ो ना उनको अकेले, वो दोनों हैंडल कर लेंगे. सब लोग एक दूसरे के पीछे ट्रोल करने में लगे. एक इसको कुछ बोलता है तो इनका टीम उनके पीछे, इनका उसका टीम इसके पीछे. क्या चल रहा है यार? हम लोग के पास और कुछ लाइफ में करने धरने को नहीं है क्या? अपनी पर्सनल लाइफ में ध्यान दो, अपने स्टडीज पे फोकस करो, फैमिली पे फोकस करो. all this will be in the past, okay, very soon. थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा. बट आप लोग ना फालतू का माउंटेन ऑफ अ मोलिल, सॉरी, हाँ करेक्ट, हाँ बना लिया रखा है. सो ये क्या, क्यों फालतू में तुम इन चक्करों में पड़ रहे हैं? जिसको क्या करना है करने दो, ठीक है. श्वेताब सर बहुत परेशान हो गए कंट्रोवर्सी. आपको कैसे मालूम श्वेताब सर? आप लोग, मैं बोला ना, डोंट मेक मी टॉक अबाउट एनीबॉडी. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट SM, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट प्रखर, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट श्वेताब. Nothing to do with all this. My work has nothing to do with this, what is going on. I have come here to talk to you all today. ADHD was the topic. Hopefully next week I'll do a lemon down session जहाँ पे सिर्फ हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है. तो ओके, किसने किस पे टॉपिक? मैम एक मिनट. हाँ, मैम का ट्रेनर भी लाइक फिट करके भेजा था. क्या होगा? आई नो यार, वो मुझे देखेगा ना, और ऊपर से मैं एवरी अदर डे बोलती नहीं आज मेरे से एक्सरसाइज नहीं होगा. दे आर माय फ्रेंड्स, यू शुड सपोर्ट. नो, आई बाय द वे, they are adult enough to handle their problems. 1, 2, Shwetab and I just collaborated. We are not friends. Please understand, friendship अलग होती है. और मैं कौन होती हूँ उनको कुछ भी बोलने के लिए? सब अपने जगह, मेरे हिसाब से सब अपने जगह राइट होते हैं, सब अपने जगह रॉन्ग भी हो सकते हैं. तीनों के तीनों रॉन्ग भी हो सकते हैं, तीनों के तीनों राइट भी हो सकते हैं, तीनों के तीनों मिक्स्ड. कोई इस पॉइंट पे राइट, मुझे क्या लेना देना? मुझे कोई लेना देना. स्टॉप टेक्सटिंग मी एंड स्टॉप, लेट मी फोकस ऑन माय वर्क. I have nothing, and don't think that just because we collaborated with people that they give us the right to intrude in their private life, or when they are maximum hi hello how are you सब ठीक है, उतना तक होता है. बट हम लोग एक दूसरे को अपने लाइफ के मेन मोमेंट्स में, जैसे सपोज मेरे साथ कुछ चल रहा है, तुमको लगता है मैं फोन उठा के श्वेताब से बात करती हूँ? नहीं. तुमको मेरा कोई ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है. मेरे पास जैसे मेरे रियल लाइफ फ्रेंड्स है, मेरी रियल लाइफ फैमिली है, उनके पास भी वो लोग हैं. सो डोंट वरी अबाउट देम, ऑल ऑफ देम विल बी फाइन, एंड दे, ये थोड़ा इट विल ब्लो ओवर. सो स्टॉप बीइंग सो ओवर द, मैम यू आर टू स्वीट टू गेट. नहीं, इट इज नॉट स्वीट. आई हैव माय ओन टेक आल्सो ऑन इट, बट आई थिंक me talking about it, okay, is like saying कि I want also to gain ये मसाला मिर्च लगा के कंट्रोवर्सी में purposely छलांग मारने का, when you have nothing for me to do with it, right? So I have nothing to do with it. अभी क्या, अरे भाई मेरे बच्चे, मेरे YouTube कम्युनिटी में SM जैसे ट्रोलर के कोई जगह नहीं है. अरे तुम किसकी ट्रोलर? देखो, मुझे किसी की साइड नहीं लेनी, ठीक है. मुझे लगता है मेरे पास बहुत काम है. जब से मैं आई हूँ, आई कांट टेल यू द अमाउंट ऑफ DM. मैंने एक हफ्ते, आई वोंट से कि बिल्कुल काम नहीं किया. किसी ने कमेंट किया था कि मैम अपना काउंसलिंग कर दी. यस आई डिड. I will not deny that I didn't work. I did, but I didn't take so many cases, and I was like, and the funny part was this, okay? So I had written on Insta ki write to me and say if it is urgent. अब just because I wrote that #urgent के इतने सारे messages आए थे, मुझे हंसी आने लगी. ऐसे हर चीज urgent कैसी हो गई? So, but anyway, I tried my level best to reply to them, and I did get back. And since I've come back, all I've been doing is clearing my messages. But yeah, सबको appointments मिल गए हैं. हाँ, अभी 4-6 और बच्चे हैं, DMs ज्यादा नहीं है. But I will, महान आत्मा doesn't take controversy to head. हाँ, like यार हर चीज में मत पढ़ो. हर कोई कपड़ा क्या पहनता है, कोई क्या बोलता है, हर चीज में आजकल की जनरेशन को इतनी चुल मची है ना. तुम लोगों को सबके बीच में छलांग मारने की. चुप करो ना, चुप बैठो ना. लाइक एक जैसे किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, वो उनका टाइम था बोलने का, उन्होंने बोल दिया, कर लिया. तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो? तुम किसी के, who are we to comment on people's lives, you know? Even every YouTuber took stand against, क्या took stand against, we should, अरे देखो, every YouTuber
यहाँ है, रचना दरियानी यहाँ है। हम YouTube पे पॉलिटिक्स खेलने नहीं आए हैं, हम किसी के बातों में बीच में पढ़ने नहीं आए हैं. I have got better things in life. I have so many cases, real life cases, real problems. If I tell you from like, I've just started working since yesterday. Okay, no, yesterday, no, Monday, right? And I have actual problems to deal with. Okay, people have actual problems. These are not problems for me. So let it be. Stop over dramatizing everything. Yeah, just chill. इस बंदे को बोलो chill. और मेरे को छोड़ो यार, अकेले मेरे को नहीं बात कर. ठीक है, नहीं करना तो नहीं करना. हाँ, अभी क्या, एक मिनट, क्या हो गया ये इतना इनलार्ज हो गया. ठीक है, किधर गए हम लोग. मैम व्हाट टू डू. अच्छा मैम, रचना मैम, यार स्कूल में, यार यार तेरी यार लग रही हूँ कि मैं, रचना मैम भी बोलता है, यार भी बोलता है, क्या पता नहीं. हाँ, सो क्या, हाउ टू ओवरकम पास्ट बुलिंग ट्रॉमा. रचना मैम, स्कूल में बुलिंग थी और अब वैलिडेशन की बहुत तलब होती है कि हर बार मिरर में देखना, पूछना सबसे कैसा लग रहा हूँ, हाउ टू ओवरकम दिस. इस टॉपिक पर वीडियो बनाने की जरूरत नहीं बेटा, ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है. आप मुझे ये स्नैपशॉट के साथ डीएम करो, आई विल गिव यू व्हाट यू नीड टू डू, but you need to understand it is not something overnight that I will give you something and all of a sudden you will stop seeking validation. It is a constant thing. Aaj jaise, by the way, I'm going to get someone for fitness. I will announce it. So वो मुझसे पूछ रहे थे कि you know कितने लोग आएंगे and all of that, right? We were having like a conversation before, like we have to give date options, but we were just discussing. And this is what I told that person. I said, even if we help one person, if we make a difference in one person's life, it is something worthwhile. Even if like 2 people show up on the podcast. Now, if I was playing the numbers and the likes game and the validation and approval game, like तुमने बहुत बार देखा है कि अभी तुम 4-5 लोग देख रहे हैं, मैं हूं ना यहाँ, मैं कहीं जा नहीं रही हूँ ना. So this is what you need to understand. Till the time you do not stop seeking outside validation and approval, अंदर से हमेशा empty रहोगे. So you have to learn कि चाहे compliments मिले, चाहे आपको negative comments मिले, उसके एक boundary होनी चाहिए. It should not get to your head either which ways, because you should be so comfortable in your skin that you can look at yourself and say कि like I get a lot of compliments, right? I don't get it to my head कि wow मैं हूर पर नहीं. ग्राउंडेड, दोनों तरफ से ग्राउंडेड होना पड़ता है. अगर से आपको कोई नेगेटिव भी लिखता है, अगर से कुछ बोलता भी है, हमेशा पूछो कि फैक्ट क्या है, फिक्शन क्या है. लाइक जैसे आज किसी ने का जो काउंसलिंग कॉल में थे, सो उनको हमेशा ऐसा लगता है करके उनके बारे में लोग बुरा बोलते हैं. नॉट, आई सेड इज इट ट्रू, दे से नो. Then if it is not true but you still buy it, it's because you have to learn to understand that some people bitch about you and say the negative things about you because they have nothing better to do. Sometimes they are just plain jealous, sometimes they are low on emotional intelligence. There are many reasons one could bully you. अभी आपने बोला आपको बुली हुआ है, तो आप कॉन्स्टेंटली ऑब्वियसली लुक्स लाइक आपके वेट को लेकर, क्योंकि आपने बोला आप घड़ी घड़ी अपने आप को अप्रूवल मिरर में देख के करते हो. सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको लोगों ने आपके साइज के बारे में या हाइट के बारे में आपको ऐसा बोला है. एंड ओके मैम व्हाट टू डू. ये तो कोई और नीनी का भी सिमिलर मैसेज है, व्हाट someone is bullying in classes. So देखो and making fun of me, every single classmate and even the teacher, my confidence is very low. Okay, first and foremost, if the teacher is doing, it is very damn sad. I mean, बच्चों को तो वैसे ही ब्लडी दिमाग नहीं होता. Many a times लोगों को इंडिया में स्पेशली, मैंने जितना जब से 2 साल से मैं देख रही हूँ, I can see there is this thing about people do not understand the boundaries. They think मस्ती और ह्यूमिलिएशन में उनको फर्क नहीं समझ में आता. उनको लगता है इट इज ओके, क्योंकि शायद कोई उनके साथ कर रहा है तो वो किसी और के साथ करते हैं, किसी ने उनको करेक्ट नहीं किया तो वो कंटिन्यू करते हैं. सो एक सेकंड में जूस पी रही हूँ. ओके, एक तो 1 मिनट, मेरा मैसेज है. ओके, इट्स यू. ओके गौरव, आई एम गिविंग यू, आई एम मेकिंग यू co-host, so in case someone troubles us, you can. Okay, and
जैसे जैसे मैं बात कर रही हूँ और भी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, चलो ठीक है। तो देखो, बुली क्यों बुली करते हैं, हमने ये पूरा कवर किया था। हमने एक स्पेसिफिक पॉडकास्ट किया था जहाँ पे नॉट जस्ट मी, ईच ईच पर्सन हैड टू से व्हेन दे गॉट बुलीड, हाउ दे गॉट बुलीड, हाउ डिड दे डील विद इट। अब मैं तुम्हें जनरल एक बेसिक तरीका सिखाऊंगी, क्योंकि एवरी पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट you have to be so strong in your own self, the self worth. अगर से आपकी सेल्फ वर्थ लो है तो आपको जल्दी जल्दी चुभेगा। आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो तो तुमको हर बात, जैसे आज मैं जैसे वो क्लाइंट को बोल रही थी, आर यू श्योर दैट यू आर नॉट टू सेंसिटिव, एंड तुम हर चीज को दिल पे नहीं ले रहे हो। पहले तो उतना तुमको जानना है अपने बारे में। अगर से तुम उतना भी नहीं जानते अपने बारे में, देन यू नीड टू गेट टू नो योर सेल्फ कि आर यू मेकिंग a big deal out of it. Okay, so now second thing, if the teacher is doing, देखो आजकल आप लोगों के पास, आप टीचर को जाके खुद बोल सकते हो, अगर से टीचर, and record the conversation. Okay, make sure that you, the reason people get away with bullying, and this is what we had spoken on the podcast, I'll just summarize the points, is because people get away with it. They don't know that they are accountable. You see, so including this teacher of yours, yes, the teacher, if is not grading your papers and all, I can understand it can be a little difficult, but you can politely tell the teacher. If the teacher doesn't listen, you can actually complain to the principal along with your parents. Why are you keeping quiet? If so many people are making fun of you, why are you letting them do that with you? Okay, हमारा अगर से हम अपने लिए स्टैंड नहीं करेंगे, यू नो, अगर से हम ही अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे। मैं तो लास्ट टाइम हम जब मैं बुलीज पे पॉडकास्ट किया था, मैंने ये भी कहा था कि आपके इर्द गिर्द अगर से कोई बुली हो रहा है, उनको सपोर्ट करो, उनका उनका उनके साथ उनका स्टैंड लो, उनको मदद करो। बिकॉज कभी कभी जो लोग बुली होते हैं उनमें वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता टू फेस देम। सो इफ यू हैव फ्रेंड्स and around school, in class or outside class, you have some people, tell them to, you know, be with you and confront these people first by text and tell them, hey, listen, I don't like what you're doing, could you please stop? Then if, and now that you have proof, okay, then after that आपको लगता है कि इसके बाद भी वो इंसान स्टॉप नहीं कर रहा है, then you should speak up. The other thing I would tell you is to Google some funny and intelligent comebacks, because क्या होता है, ये bullies ऐसे होते हैं कि उनको पता होता है, एक तो उनका power होता है, right? When they know that they have so much control over you and they see you agitated or they see you upset or something, they do it even more so, क्योंकि अभी तुमने उनको इतना power दे दिया है कि उनको पता चल गया है कि okay, ये इंसान मेरे बस में है, तो आपको वो कंट्रोल नहीं देना है उन पे। यू आर नॉट सपोज टू, एज मच एज पॉसिबल, स्टॉप शोइंग दैट इट मैटर्स टू यू, क्योंकि वो फिर नेक्स्ट टारगेट पे जाएंगे। बट इवन हैविंग सेड दैट, इफ दे आर कॉन्स्टेंटली बुलिंग यू एंड द अदर पीपल, गेट टुगेदर एंड कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, रिकॉर्ड करो, फोन निकालो, बोलो हाँ क्या बोल रहे हो, मेरे को, लेट मी मेक यू फेमस ऑन सोशल मीडिया। इफ you can tell your parents, if it's really really hurting you, tell your parents about it. Let them come to school or college and address it. Okay, नहीं पुलिस कंप्लेंट करोगे, पुलिस कंप्लेंट इज द लास्ट वन, ठीक है, वो लास्ट लेग पे आता है जब कुछ काम नहीं करता और ये इंसान आपको धमकी दे रहा है एंड ऑल दैट, एंड यू आर फियरिंग फॉर योर लाइफ। ओके, नाउ रही बात, अगर से सपोज, जस्ट सपोज कि आपके पेरेंट्स, आप उनमें से हो, मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स बिल्कुल बिल्कुल उनके लाइफ में दूर दूर तक उनकी कोई छत्र छाया नहीं है, और they don't want to talk about it, they're like, you must be the fucking problem, that's the person, you have me. Okay, I will try my level best. If you want, I will speak to the bully for you on a video call if need be, and tell them that they should not be doing it and we can take action or whatever. So that's the last thing that I will do. I will try my level best. I have tried it with one person, luckily उतना तक आया ही नहीं, क्योंकि जब उसको ये सब व्हाट्सएप किया, इस इंसान को समझाया, बाद में, yeah, they will abuse me, of course they will abuse me, so but if it is recorded conversation, you can make a person famous nowadays. आजकल
जो भी हिट कर रहा है, टीज कर रहा है, बुली कर रहा है, चाहे लड़की लड़के को कर रहा है, रिवर्स, आजकल सोशल मीडिया बहुत, उसका प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग हो गया है, ठीक है? तो डोंट अंडरमाइन दैट, बट दैट शुड बी योर लास्ट ऑप्शन, बिकॉज who knows, this person might like get super angry for, you know, that you have made them so famous. So don't use it till it's not done. If you see Peepoy is mostly, he talks about social causes, right? अभी उस दिन किसी कुत्ते को किसी ने स्टिक से मारा, फिर एक जर्मन कपल था जिसको बहुत तंग किया. So these are the videos which go viral, and then they help the people to yeah, our Julie blogs, yeah. So these are the things. देखो फिर उनको काम में आया, right, ये videos and all that. So don't undermine the power of social media. Having said that, that should be your last option. Start with basic working on your self-worth. Second, making yourself so strong that these, ये क्या है ना, अभी जब वो तीर मारते हैं, आपका शील्ड बहुत वीक हो गया है, हर चीज आपको चुभ रही है जब वो फेंक रहे हैं, वो लिटरली पेपर का बना हुआ है. आपको ये शील्ड स्ट्रांग करनी है, क्योंकि आज, कल, 5 साल, 10 साल from now, you are going to meet people who will always be not as nice as you are. Unfortunately, we have these kind of people, and you have seen, even though I help so many people, there are kind of people who will trouble you even if you're the nicest person on this planet. Okay, so you have to first and foremost learn to make this so rock solid कि जैसे मेरे को भी इतनी बुलिंग होती है, राइट, यूट्यूब पे, कभी जूम पे, तो कभी डिस्कॉर्ड पे कैसे कैसे गंदी गंदी गालीज देके जाते हैं, जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं है. लाइक कैन यू इमेजिन, even someone like me gets bullied and trolled. And first time जब हुआ था वीजा भी, मैंने लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि श्वेताब के चैनल पे आने के बाद जब लोगों ने गंदी गंदी कमेंट्स, सेक्सुअल कमेंट्स भी डाली, और उसके बाद डिस्कॉर्ड पे जब मैंने डिस्कॉर्ड भी स्टार्ट किया, जब किसी को हमने निकाल दिया एडमिन की तरह, या कोई एक्सपर्ट था जिसको हमने निकाल दिया, वो इंसान वापस आया और इतनी गाली गलोच मुझे एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? सो I was so sensitive earlier. मुझे जल्दी से रोना आ जाता था because I don't come from this kind of background. हम लोग कभी किसी के सोशल मीडिया पोस्ट पे, कभी किसी के बीच में दखल अंदाजा नहीं करते, इवन इंक्लूडिंग unless मेरे सामने फिजिकली कोई किसी को असॉल्ट कर रहा है, then I will perhaps, you know, gather people and this thing. But generally I am the one, we in our lives, in our social circle and in our society, we are very careful with what we speak. We try not to be hurtful. So all this was like, what the fuck, like I was like, ऐसा भी होता है दुनिया में. But fast forward to today, अब मैं थोड़ी ज्यादा प्रिपेयर्ड हूँ. सो ये जो भी आपके साथ हो रहा है ना, इसको तुम इतना दिल पे लेके मत करो, क्योंकि कल, परसों, 5 साल from now, for all you know, there will be some new bully in your life. And these people, this is your training ground. Your school and college is preparing you for terrible people. Not many, but there will be people in your lives. And अभी सीख लो, क्योंकि मैंने तो नहीं सीखा था. हम लोगों के टाइम में बुलिंग ऐसा नहीं होता था. हमको कोई, we had never heard the word bullying in our, because I come from that generation and from a girls' school, right? So we didn't have anyone who was like really bullying us or something and teasing us. And हाँ, बचपन में टीज तो बहुत लोगों ने किया, पर हमने कभी इतना दिल पे नहीं लिया. कलर को लेके, हाइट तो नहीं थी, पर कलर को लेके, चश्मा को लेके, ब्रेसेस को लेके हमारे इधर भी टीजिंग काफी होती थी. बट हम वो टाइम पे इतने फ्रजाइल नहीं थे. मेरे हिसाब से ये जनरेशन को थोड़ी सी ज्यादा टची हो गई है, कि उनको लगता है. And yes, in every podcast or every video I make, I do tell people कि लोगों का मजाक मत उड़ाओ. Understand कोई मजाक ले सकता है, कोई मजाक नहीं ले सकता. So you have to be very careful with that, okay? कि you don't hurt sentiments of people. So I hope I have answered the questions for the 2 people who asked regarding bullies, okay? And if you ever need any help, I'm there for you. Okay, ma'am is here to help in real life. ये सब controversy से कोई नाता नहीं है, correct? किधर, अरे भगवान, इतना आगे कैसे गया? एक मिनट. Okay, teachers at here take it too seriously, yeah, so I have to deal with this.
this was way, now my image is clear in front of all children. Okay, ma'am, I was wondering how ill prepared parents affect the child. I think that some of the problems stem from there. Like, I think they are socially awkward, and also the reason that I'm socially inept. Okay. I agree little bit, but I don't agree completely with what you said. I'll tell you why. Okay. So I come from a village, right? Once upon a time, this place was a village, right? Lonavala was a village. My parents were not educated. But look at me today. So don't completely, it is very easy to find faults in our upbringing. We do have a choice at any given moment. आप अगर से socially inept हो, तो you can join a public speaking class, you can learn communication, you can practice. We have Discord. हमारे ज़माने में classes नहीं थी, Discord नहीं था, किसी से ऐसा कभी सीख नहीं सकते थे हम लोग कुछ भी, right? And आपको समझना है कि yeah, you can talk. So, don't blame your parents because they didn't get that kind of upbringing that you people have the option today. The amount of options you people have, whether online or offline, none of us, if your parents must be around my generation, what did we have? We didn't have social media, we didn't have classes. अगर से उनको वो चांस नहीं मिला, पर आपको चांस तो मिल रहा है ना. बट आई नो मेनी पेरेंट्स हु आर फ्रॉम विलेजेस एंड शायद पूरी तरह से इंग्लिश भी नहीं बोलते, बट आजकल उनकी बच्चे फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं, वो स्कूल में कॉलेज में अच्छा कर रहे हैं. सो यस, थोड़ा बहुत तो हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं. अभी आपको मैं बताती हूँ कि people look at me, right? I'm pretty open book and I talk about everything and I'm so vocal, so straightforward. But both my children, okay, they both get to learn from both the parents, right? My husband and me. But both have a different personality. Do not forget the innate nature of a person. My son is not as friendly as my daughter. My daughter will like एक दिन में वो 100 दोस्त बना सकती है, और मेरा बेटा बहुत लेड बैक है. वो एक दो दोस्त बनाएगा, बात करेगा जब मन करेगा, नहीं करेगा. अभी दोनों के पेरेंट्स सेम है, दोनों की अपब्रिंगिंग सेम है, बट यहाँ पे एक पर्सनालिटी भी बात होती है. बट अगर से आपको सीखना है, आपको बेटर होना है. आपको क्या लगा था मैं जब लोनावला में थी ऐसे बात करती थी? नहीं, आई हैड टू ग्रूम माई सेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग बिकॉज आई केम फ्रॉम अ विलेज, राइट? And directly I was thrown abroad. Imagine आप लोग तो फिर भी इंडिया में हो, मुझे I got like a fucking culture shock. I'm like, wow, लोग fondue खा रहे हैं, ऐसे तैयार हो रहे हैं, मुझे तो basic etiquette नहीं आता. Fork, yeah, I knew how to eat with a fork and spoon, but I didn't know कि कौन सा left पे रखते, कौन से right. उस पे से याद आया, there is going to be an etiquette coach also coming on a podcast. अभी तक date fix नहीं हुई. So I'm trying to teach you all these things that we should be actually, one second, let me read. What did you write? What about Sandeep? What was Sandeep Maheshwari with the audience? Who? यार फिर संदीप महेश्वरी है, भगवान तेरे को और कुछ नहीं आता क्या? हाँ, तुमको जाना है, प्लीज जाओ, प्लीज मेरे को प्लीज कंट्रोवर्सी से दूर रखो. यार, don't bring misery to yourself by pursuing in under other people's problems. अब मैंने कुछ आलतू फालतू, सपोज मैंने कुछ भी बोल दिया, ठीक है, कुछ भी बकवास कर दी, I get carried away. Don't do these impulsive things. I want to not be one of those. तुमको शायद लगता होगा कि whoever is here, तुमको लगता होगा कि मैं यूट्यूबर हूँ तो मैं मुंह फट हूँ. नहीं, I am straightforward, but I don't want to be hurtful. I'm straightforward, but I don't want to say things which is going to upset anybody. Who the hell gave me the right to interfere in this? क्या मेरे family members है वो? नहीं. Have they come to me? It is unsolicited advice that I will be giving. और बिना reason तुम्हारा कोई काम भी नहीं है उसमें छलांग मारना बातों में. इसलिए आजकल की मेंटल हेल्थ बहुत खराब है लोगों की. हर चीज में तुम लोगों को पढ़ना है. अरे अपना काम करो, अपनी लाइफ देखो, अपने प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करो, दूसरों के प्रॉब्लम में मत पड़ो. वो अपने आप दोनों बड़े हैं, रिजॉल्व कर लेंगे. आपको ये सब चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है. और मैं देखती हूँ सोशल मीडिया में, इस एक्ट्रेस ने वो किया, उसने वो किया, उस यूट्यूबर ने ये किया.
हर चीज पे हजारों 2000 कमेंट्स. आई एम लाइक वाओ, हाउ मच फकिंग फ्री टाइम यू पीपल हैव, that you have time to interfere into everybody and give your moral policing वाला ज्ञान. छोड़ो यार, सब लोग गलती करते हैं, सब सीख जाएंगे, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, अभी हम क्वेश्चंस पे आएंगे. मैं क्या 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 एक मिनट. कहाँ, एक तो फिर इतना सारा चैट. मैम आई हैव अ मैसेज ऑन इंस्टा प्लीज. ओके ओके, एक सेकंड. कहाँ, यहाँ पे तुम्हें मैंने पूछा ना गौरव, बात करो. तुम्हारा क्या क्वेश्चन? Ma'am, who's that person who just left the chat? He was asking me. And never mind. I don't want to take unnecessary names. Okay. So, okay, I would say take content from YouTube and don't idolize. You should not idolize anybody. Okay, anybody. Why? Because, ma'am, mic is not opening. Okay, 1 minute. So, here I've unmuted you. तो एक मिनट में नेक ठीक करने दो, बैठा बैठा. तो क्या होता है जब आप आइडलाइज करते हो किसी को, आप ये इमेजिन करते हो. आइडलाइज करने का मतलब क्या? व्हाट इज द टर्म एक्चुअली मीन्स लुकिंग अप टू समवन, बिलीविंग दे आर देयर, दैट दे आर परफेक्ट इन एवरी वे और इन द वे योर एक्सपेक्टेशंस आर फ्रॉम देम. अब तुम सब लोगों को कैसे, जब हम ही परफेक्ट नहीं है, तुम्हारे ना यूट्यूब आइडल्स, कोई कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता. तो उनमें अगर से ये फ्लॉ है या तो वो फ्लॉ होगा. Don't do this and look up to people and think that they cannot make mistakes, including your parents, because they are as human as you and I. Okay. So I don't understand, Gaurav, you keep saying ki unmute you. I unmuted you. Can you speak? Do you want to speak? Okay. Gurkiran, please text me on Insta if that's you, because I am not going to unmute you till I don't know it's. हेलो. हाँ बेटा बोलो. हेलो. पहले तो मैम गुड नाइट. गुड नाइट साले, 10:30 बज रहे हैं यहाँ पे, तो तुम्हारी गुड नाइट कैसी है? गुड इवनिंग बोलना है तुम्हें. ओके मैम, जो भी है. मैं मैम जैसे अभी आपको मैसेज भी कहता कि मैं अभी 12th पास आउट की है, तो अभी मैं कॉलेज वगैरह के लिए देख रहा हूँ. तो मैम मैं ना 2 कॉलेजेस में कंफ्यूज हो रहा हूँ. तो आपको मैं डिटेल में बता दूं. ओके. तो इंस्टा पे नहीं बताना, जिस पे मैं. इंस्टा पे मैम चैट में वो समझ नहीं आएगा चैट में. हाँ हाँ. तो मैम फर्स्ट कॉलेज मतलब भी वो काफी महंगा है, और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी है, एनवायरनमेंट अच्छा है, ये और बट वो दूर का. तुम्हारा फर्स्ट वाला है राइट? हाँ हाँ, यस मैम. तो वो काफी दूर है, और वहाँ पे जैसे अगर मैं मतलब एडमिशन ले ली तो मैं मैम वहाँ पे टाइम भी कम ही मिलता है किसी को भी और चीजें करने के लिए. एक मिनट. फर्स्ट वाले में क्या अच्छा है बताओ. मैम एनवायरनमेंट अच्छा है, और वो प्लेसमेंट्स वगैरह भी सभी करा के देते हैं. और बाकी मैम उसके डिसएडवांटेज ये है कि वो काफी एक्सपेंसिव है. ओके. एक्सपेंसिव, और वो टाइम नहीं मिलता वहां से, क्योंकि वो काफी दूर है ना, तो इसलिए ट्रैवलिंग में भी काफी टाइम चला जाता है. तो कितना अगर टाइम? मुझे कोई और को आई थिंक 1.5 से 2 घंटे चले जाते हैं. पर लाइक वन वे कि टू वेज? वन वे. ओके ओके, गॉट इट. दूसरे का क्या प्लस पॉइंट है? दूसरे का मैम ये है कि वो काफी 3 to 4 टाइम चीज है. वहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा है, टीचर्स भी सारे अच्छे हैं, बट वहाँ पे टाइम भी मिल जाएगा और कोर्स करने के लिए. बट वहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह की कोई गारंटी नहीं है. और वहाँ पे कुछ जैसे कि हम कहते हैं बेसिक चीजें सारी हैं कॉलेज की, बट कुछ एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी जैसे वहाँ पे क्लब्स वगैरह नहीं है, तो इसमें मुझे काफी कंफ्यूजन हो रहा है. ओके. आज मेरा एक आज था या कल, लाइफ बोर्ड कौन सा केस था, तो ये इंसान को प्लेसमेंट मिली, ठीक है, फ्रॉम कॉलेज. एंड देन what happened is when the person started working, they tortured the person, as in जबरदस्ती काम देना, all of a sudden field पे भेजना बिना any training, like as a fresher, okay, who's just been placed. They just push. And then what happened is they had in this placement, they will only place you once. If you do not work there, they will not replace you. Okay. So ये जो तुम प्लेसमेंट की मेरे को बात कर रहे हो, मेरे हिसाब से, और मैंने तो देखा है इवन फ्रॉम पीपल फ्रॉम IIM, उनकी भी प्लेसमेंट इतनी इजी नहीं होती.
ठीक है, क्योंकि यू नीड मोर क्रेडेंशियल्स और वॉट एवर, देर आर लॉट्स, और तुमको फालतू कंपनीज में ले लेंगे, ठीक है, जरूरी नहीं करके जस्ट बिकॉज आप वहां से आए तो आपको प्लेसमेंट। तो मुझे नहीं लगता कि आपने सिर्फ प्लेसमेंट्स को देखना है, क्योंकि अगर से आप एक अच्छे कॉलेज से जा रहे हो, either which ways a lot of opportunities will open. There are so many people who get placed but hate the job that they do. Then they have to start any which ways, right? ऐसा लाइफ में आपको बाद में भी होगा कि suppose even if you go to a college with placement or without placement, there will be times you'll be without a job. There will be times that you will yourself have to work hard and give bathere interviews to make the cut. Okay, so that should not be your thing, because if you are a good student, okay, if you are in hard working, if you're coming from a, अगर से तुमने ये नहीं बोला कि एक कॉलेज दूसरे से बेटर है, राइट, एक ज्यादा एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव डजंट इक्वल्स टू लाइक मेरी बेटी इंटरनेशनल स्कूल जाती थी, ठीक है, एंड या उधर से अगर से वो पास होती तो शायद यू नो एक मिनट, सो तो अगर से वो ऐसा होता, ठीक है, कि उसको मैं उस स्कूल में डालती या उससे वो पास आउट होती, उसके शायद चांसेस बेटर होते, पर वहां पे बिल्कुल कोई कंपटीशन स्पिरिट नहीं थी, उन्होंने उधर एग्जाम्स नहीं हो रहे थे, दे वर मेकिंग हर मोर थिंकर्स, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द रियल वर्ल्ड, राइट, द आईबी वर्ल्ड. सो देन फॉर माय सन आई देन पुट हिम इन अ cheaper school, okay, and perhaps not so prestigious as that, but then it was higher in the ranking of the IB ranking. समझ रहे हो? So to get something you have to give up something. अभी अगर से मैं जैसे मेरा मानना है कि हम सब हमारे फैमिली में कोई एक इंसान भी IIT, IIM, नीट, जेई किसी ने कुछ नहीं किया, बट सब लोग बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत उनकी IQ अच्छी है, उनकी पर्सनालिटी अच्छी है. ऑल दिस इज गोइंग टू गेट यू अ जॉब प्लेसमेंट, ओके, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, दैट just because that college gives you one placement, it might or might not work out. Is that really your pros list? What if it's the faltuest place to work? Then what will you do? So I would suggest, एक तो तुम अपने आप को, एक मिनट तुम्हें अनम्यूट कर रही हो, तुम म्यूट क्यों हो जाते हो, तो मेरे से बात करो, ठीक है, तो ये निकल गया, ठीक है. अब ये बताओ, और अगर से नजदीक है, यू सेव टाइम, क्लब्स तो आप बाहर भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, बुक क्लब. मैम यहाँ पे हमारे यहाँ रहता हूँ मैं, यहाँ पे तो कोई क्लब नहीं है, कॉलेजेस में ही मिल सकते हैं, अगर मिल सकते हैं. ओके, सो तुमको डिस्टेंस देखना है, ठीक है, तुम्हें ये देखना है कि एक मिनट है, सो यू नो दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर दिस. तुमको सबसे प्रायोरिटी क्या है बताओ. तुमको डिस्टेंस है, अगर से तुम्हारे पास उतना पैसा है, ठीक है, तो डिस्टेंस शुड नॉट मैटर टू यू, बिकॉज लोग तो डिफरेंट कंट्रीज जाके पढ़ते हैं, लोग अंडर द स्ट्रीट लाइट पढ़ते हैं, इतना अगर से जिनको मेहनत करनी है तो वैसे मेहनत करते हैं. तो मुझे नहीं लगता दैट इन दैट गिवन टाइम, लेट्स से 1.5 hours, बॉम्बे में तो जनरली 1 घंटा लग जाता है कहीं भी पहुंचने को इन अ सिटी, ठीक है. So let's say, why don't you use that time wisely? Maybe you can study, maybe you can, you know, think of how you're going to utilize your time. Okay. So don't make that your criteria. Can you afford it? That's one of the most important things. If you cannot afford it, then why are you even thinking about it? Correct? अगर से तुमको placement important है, अगर से ये college से pass out करके आप ज़्यादा better करोगे, ठीक है, then take this college. If the credentials really matter in India and the clubs are important to you, as I saw, suppose मैं तुम्हें बोलूंगी go with the second college, what will you say? मैम लाइक मैंने आपको एक बात बताना भूल गया, जो मैंने फर्स्ट कॉलेज का है आपको एक्सपेंसिव वाला, उसमें लाइक जैसे अपन कह नहीं देते भी पॉपुलैरिटी ज्यादा है कि हर कोई जानता है इस कॉलेज को,
तो वो उसकी काफी अच्छी है, बट जो सेकंड वाला है उसकी तो आई थिंक टायर 4 पे ही है वो। क्या है? मतलब काफी लो है, मतलब कि कोई कोई जानता है। अच्छा, देखो, अगर से लाइफ में हमको कुछ करना है, जरूरी नहीं करके हम सब हाई फंडा स्कूल कॉलेज में जाके करें, ठीक है। सो आपको समझना है करके ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करते हो, ओके। आप जरूरी नहीं है करके उधर पॉपुलर है अनपॉपुलर है, हम सब लाइफ में कहीं ना कहीं विल गेट सॉर्टेड, बट लुक्स लाइक you are more interested in the first one, because when I said how do you feel about going to the second one, immediately you said कि पर वो पॉपुलर नहीं है, फर्स्ट वाला पॉपुलर है, उसमें ज्यादा लोग उसके नाम को जानते हैं, तो गो विद द फर्स्ट वन। मैम मेरी ये थिंकिंग है कि भी, जो जब हम किसी भी कॉलेज में 3 to 4 टाइम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी स्टूडेंट होंगे वो काफी सीरियस होता है, सीरियस तो होंगे ही वहाँ पे, अगर कोई 3 और 4 टाइम मोर पे कर रहा है, जो दूसरे कॉलेज से भी, जहाँ पे तो चीप चीप में हो जाती है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ये आपको गलतफहमी है करके जस्ट बिकॉज पैसा ज्यादा भर रहे तो ज्यादा सीरियस होंगे, उल्टा कभी कभी बहुत ज्यादा रिच किड्स भी होते हैं तो वो ब्रैट्स होते हैं, राइट, हो सकता है ना कि Yes. चलो बाप के पास बहुत पैसा है, फकिट कौन पढ़ाई करे, चलो बंक करते, एनीथिंग कैन हैपन। सो डोंट गो विथ कि जस्ट बिकॉज पैसा ज्यादा है तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं आपको वो नहीं देखना है, आप क्या करने वाले वो देखो, कि इरिस्पेक्टिव सपोज ज्यादा क्राउड ऐसा आ गया जो मटर गश्ती वाला क्राउड है, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, तो मतलब आप ध्यान नहीं रखोगे अपने पढ़ाई का। इफ यू कैन अफोर्ड इट, ओके, Yes, ma'am. and you feel that the placement is important to you and the credentials, as it is you said that the college is more famous and it's, so that means your placement will be perhaps a little better, right, not necessary कि ये कॉलेज में जो जा रहा है कभी काम नहीं कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, फिर वो कॉलेज अभी तक बंद हो गया होता। Yes, ma'am. Everybody cannot afford very expensive colleges or colleges with clubs and all. So see, in the first one I can see, मैंने जब तुम्हें बोला क्लब्स के बारे में, तुमने बोला पर हमारे इधर तो है ही नहीं क्लब्स, यू नो, सो आप क्या करोगे मुझे बताओ, क्या आप कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते, सो आप डिसाइड करो, क्लब इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस को हटा दो, क्योंकि आइदर विच वे, सेकेंड कॉलेज में डिस्टेंस कितना है? 20 से 25 किलोमीटर। नहीं, किलोमीटर में मत का टाइम, अभी तुमने इसको टाइम बात में बोला और 20, मैम आई थिंक 30 मिनट्स। 30 minutes, so let's add an extra 60 minutes, okay? Yes. Now isn't that 60 minutes worth it if you can, if you get the clubs, if you can maybe perhaps get better placement, credentials are better, then सोचो। तो ये डिसीजन आपके और फैमिली के बीच में होना चाहिए, कैन योर फादर रियली अफोर्ड द प्राइसिंग, इफ ही कैन अफोर्ड इट then I don't see many things except distance that you said with the first one, which is something, let's put it, not really a negative, you can always use like हमको इतनी आदत है, मैं तुमको बोलूं मैं बाली में थी, every place it took us 1.5 hour minimum to reach, okay, it was so fucking crowded literally, then I used my time in a wiser way. अभी जकार्ता भी is famous for traffic, Bangkok is famous for traffic, Manila is famous, तो सब लोग अपना कंप्यूटर लेके काम करते हैं, गाड़ी हो ट्रेन हो, सबको अभी आदत बन गई, तो डोंट लुक एट इट एज नेसेसरली अ नेगेटिव। इज देयर एनी अदर नेगेटिव दैट यू कैन कम अप बिसाइड्स द टाइम? टाइम में मैं बस यही है कि अगर टाइम नहीं होगा तो मैं बाकी जो कोर्सेज हैं वो भी नहीं कर सकता, और कहीं ना ये माइंड में ये चीज रहती है कि यार अगर हम इसमें 3 या 4 गुना ज्यादा पैसे लगा रहे हैं तो कहीं सस्ती से करके कहीं और चीजें भी कर सकते हैं, तो वही रहता है, यही दो मुझे तो दिखते हैं। तो सस्ती अगर से कर लेते हो तो क्या करने का इरादा है, और कोर्सेज करने का इरादा है? यस मैम, एक तो मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स कर सकता हूँ फिर, और ACCA का भी कर सकता हूँ। तो ये चीज फर्स्ट कॉलेज में नहीं सिखा रहे? नहीं मैम, सिखाने की बात नहीं है, ये दोनों चीजें ना हमें मतलब कॉलेज से नहीं करनी पड़ती, बाहर से करनी पड़ेंगी, तो फर्स्ट वाले में तो टाइम ही नहीं मिलेगा। सो देखो, अभी तुमने खुद एक काइंड ऑफ लाइट डाला है अपने इस पे, क्योंकि फर्स्ट वाले में इतना पैसा कंज्यूम हो जाएगा
कि ये बाद में कोर्सेज कैसे करोगे, क्योंकि मे बी योर प्लेसमेंट विल बी बेटर विद दीज 2 extra courses that you're doing, right? यस So then do that. But still, having said that, sit down, make a pros and cons list. जिसके pros ज्यादा है, जिसके cons you know कम है, वो choose करो. And you yourself said कि if it is really that expensive and it's bothering you, the money price point is bothering you and you cannot do other courses, forget the clubs. I mean, वो तो ठीक है यार, अभी तुम पढ़ रहे हो, तुम बाद में भी लाइफ में ये सब कर सकते हो. So you'll have to decide what are your priorities. Is it doing that other courses or being part of the club? Because here you'll have clubs which perhaps might hone your personality, but you cannot obviously talk about कि ये जो कोर्सेज आप कर रहे हो ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में मदद करेंगे, आपके जो extra curricular activities that will be more personal and the courses will be more professional. So you have to choose what do you really want to do. I know it's not an easy decision, but whatever decision you take, okay, I hope I've shed some light थोड़ा. और हमेशा अगर से तुमको मैंने अगर से बोला कि assume that you started to go for the first one and तुम्हारा फिर भी inclination second की तरफ जा रहा है, that means तुम ज्यादा वहां पे हो, ठीक है? क्योंकि otherwise you would have like freely accepted कि ठीक है फर्स्ट के साथ मैं बहुत खुश हूँ. So you have to ask yourself कौन सा तुम्हें ज्यादा खुश करता है. Yeah, it is a difficult decision, but if financially your father is not well off, don't put so much burden on him and then use the money more wisely for other things. ओके मैम. Okay? मैम एक और डाउट था कि जैसे कॉलेज का एनवायरनमेंट वगैरह होता है वो हम पे इम्पैक्ट करता है कि नहीं करता? Environment मतलब exactly what? मतलब भी वहाँ पे जैसे किसी किसी कॉलेज का होता है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे अच्छे हैं और वहाँ पे स्टडीज में स्ट्रिक्ट हैं टीचर. कोई कोई कॉलेज होता है कि बच्चे ज्यादा कर रहे हैं तो भी वो कुछ नहीं कहते. तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट वगैरह होता है वो मैटर करता है यानी हम पे Course इम्पैक्ट matter डालता है? करता है, क्योंकि I can see the discipline that is with my kids. हमारे इधर तो bunking shunking allowed ही नहीं है. I have never heard, and they report to the parents. If the child doesn't show up for one class also, we get an email from the teachers. So yes, of course it matters, क्योंकि अगर से आप एक ऐसे कॉलेज में जा रहे हैं, like ठीक है कभी कभी बंक करते हैं ठीक है, बट अगर से थोड़ी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए. ऐसे कॉलेजेस में ऐसे नहीं करके लोग बंक नहीं करते या बंक करने के बाद उनकी लाइफ सॉर्ट नहीं होती, ऐसा नहीं कहने की कोशिश कर रही हूँ. बट यस, द एनवायरनमेंट मैटर्स बिकॉज वो बोलते हैं ना, you are an average of the 5 people that you're surrounded with. Yes, इस ma'am. तरह के लोगों के साथ उठना बैठना करते हो. Birds of a feather flock together, so you don't want to get बुरे नशेली habits and people who are bunking classes, not serious about their career, because these are the people खुद तो serious नहीं है, तुमको लेके डूबेंगे. तो इसके लिए तुमको भी इंटेलिजेंट होना जरूरी है. कॉलेज हर चीज नहीं सिखाता. कॉलेज शायद केयर भी नहीं करेगा. देयर बी मेनी टाइम्स दे डोंट हैव टाइम एंड दे थिंक कि अच्छा ये आ गया है कॉलेज. बट इट डिपेंड्स ऑन अस, व्हाट डू वी वांट फ्रॉम आवर लाइव्स. आप बाद में ब्लेम नहीं कर सकते इन फ्रेंड्स को कि तूने मेरे को सिगरेट पिलाया, तू मेरे को ड्रग्स करने लगा, तूने मेरे को बंक करने, क्योंकि वो बोलेगा तू गधा था क्या, तूने मेरी बात मान ली, तुमने खुद अपना दिमाग क्यों नहीं लड़ाया. ठीक है. सो ये आपको सोचना है कि irrespective of the environment around you, you need to be very focused, okay, in life. Ki don't blame others for your downfall because they are not going to ever take the credit for it. That's what about the bullies also. तुम अगर से सारा टाइम वो बुली को इतना पावर दोगे कि वो इंसान, और फिर बाद में तुम बोलोगे अरे तुमने मुझे बुली किया था इसलिए मेरी जिंदगी नहीं, वो बोलेगा हमने तो कर लिया, हमको पता नहीं था, हम गधे थे, आप भी क्या, आपने क्यों नहीं अपनी जिंदगी को संवारा. सो हम किस तरह अपनी जिंदगी को संवारते हैं ये हमारी हमेशा से रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, है और रहेगी. सो उससे मत भागना. ठीक है. ओके मैम. ओके. एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू मैम. ओके, माय प्लेजर. Okay, taking criticism and praise, compliments. Yes, exactly. इंडिया में बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट नहीं है. करेक्ट.
मेरे स्कूल में there were rumors of me dating a best friend of mine, then I made another female friend, then a rumor started. हाँ तो ये तो पता नहीं, वो बहुत फ्री टाइम है लोगों को. 2 more, now all rumors are gone due to the confusion. Now I talk to who I want. That's a good one. Yeah, मैम यहाँ पे bully और joking में difference नहीं पता करें. Teachers at here take it too seriously, so I have to deal with this. Good. So I think Sujal, I answered your question, so I'm not. Yeah. No, I'm not saying you're blaming them. I was I'm just generally talking about that topic, that we have to finally, we won't have the perfect upbringing and the perfect parents, right? Like this person who keeps disturbing me, and by the way, people don't know, he kept coming on Zoom with really dirty names, and I didn't want to give a fuck about it, because शायद उसकी अपब्रिंगिंग बुरी नहीं है, वो इंसान ही ऐसा है, उसके करतूत ऐसे बुरे हैं. And so I don't completely blame the parents, because I don't think any parent teaches ऐसे गंदी गालियां और ये सारा टाइम जो ट्रोल करते हैं, उनका अपना ही, उनको अंदर से इतने एम्प्टी होते हैं. अभी आप बुलिंग की बात कर रहे हो, ये पर्सन इज ऑल्सो बुलिंग एंड ट्रोलिंग मी, बट दैट्स ही इज सो एम्प्टी दैट ही फील्स सो ग्रेट अबाउट हिमसेल्फ. ऑल्दो फट्टू है क्योंकि फेक आईडी से आता है, बट लेट देम बी. सो वी कैन आई कैनॉट let him ruin every stream of mine, right? So learn to let go of whatever happens in life. They will finally, get what is coming to them. क्या था, हम लोग कहाँ थे? Okay. Sorry, इतना आगे कैसे चलेगा यार, ये इतना, मैं कहाँ थी? ओए भगवान. Okay, teachers. Okay, ये वाला हो गया. Okay. Same problem. I tracked down 3 people who were spreading stuff and dealt with them. Okay, anywho, स्कूल में सबको बस एक टॉपिक चाहिए, बाकी स्टोरी. एग्जैक्टली गॉसिप. मैम कोई कमी नहीं है मुझ में, आई एम हैंडसम. मेरे आस पास सॉरी पास रहती हैं लड़कियां, शायद ये बात उनको हजम नहीं होती. चले या कुड बी, बट हैंडसम होना इज नॉट जस्ट इनफ टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. ट्राई टू बी गुड whether they are jealous or not. Don't take compliments और criticism दोनों को थोड़ा, don't let it get to your head. Okay. हाँ, दोस्त भी, लड़कों में बहुत प्रॉब्लम है कि उनको पता नहीं कब मस्ती और मजाक और दूसरों के सामने खींचातानी करना और इंसान को बुरा दिखाना काफी हद तक होता है. My long distance girlfriend broke up with me. We were about to see each other for the first time. Oh, I'm so sorry, Mark Paul. That must be fucking. So why did you break up? And if you need help, send me the snapshot so I know. I'll give you some resources. You didn't write why did you all break up. एक साल चलने के बाद and you're about to meet each other. What really happened? मैम अगर आप टाइटैनिक वॉल शिप में होते तो वो शिप कभी डूबता नहीं, क्योंकि वो आइसबर्ग आपको देख के ही पिघल जाता. थैंक यू ब्रदर. मैम कैसे हो? मैं ठीक हूँ ओम. आपसे बात हुई थी डीएम पे. यस, आई रिमेम्बर, आई चैटेड विद यू. I'm happy too. It's been a long time, we have not sat down here. I stammer, but still nobody in my college has the courage to bully me for that. That's how nice. Anonymous, I'm very proud of you. That's, I have braces and same thing. Yeah, give it back to them, man. How the hell they think that they are perfect or what? कोई perfect नहीं है. पता नहीं एक दूसरे को क्यों, parts होनी. What is going on? I'm answering question, ma'am. Was just drinking something. Yes, I was just drinking mango juice. मुझे शाम को खाना नहीं खाना है और 11 बज रहे हैं, but I just said कि let me have something before I sleep. Okay, that they want people, they wouldn't want to spend time when no one is ready. तुम लोग अपने बीच में चैटिंग कितना क्यूट है तुम लोग के बीच में, कि मेरे को पता ही नहीं मुझे पढ़ना कितना है. Okay, hello युवराज. इतने सारे मॉड है. हाँ युवराज, करना पड़ता है इतने सारे मॉड्स, बिकॉज कोई ना कोई मिसिंग रहता है और मैं देन आई कैन नॉट कंट्रोल द चैट्स, राइट. एंड ये बाय द वे मेरा सुपर चैट फीचर आया था, किसी ने देखा क्या? मुझे यूट्यूब रोट दैट आई एम एलिजिबल फॉर सुपर चैट. साला कोई तो सुपर चैट में क्वेश्चन डालो. नो, आई एम नॉट इन दुबई येट. आई विल गो नेक्स्ट मंथ. थोड़ा डिले हो गया. ओके, क्या है? 1 मिनट. सो आई डोंट हैव so I don't have the permission. मुझे मैम ने बनाया है मॉड. जस्ट बी रेगुलर. मैम को लगा तो बना देगी. युवराज. ओके.
भाई ये मैसेज से बहुत कुछ सोच सकते हैं. मैम, forgot about the person. We are always forget about the person. You are. Thank you, बेटा. Is she reading from Zoom? No, I'm reading from here also. अच्छा, मैम, you're looking झक्कास मुझे. So इसका अनिल कपूर याद आ गया. Thank you, Souvik. Thank you. Yeah, yeah, I have super chat now. I don't know. I didn't even ask them for super chat eligibility or anything. मुझे कल ही मैसेज आया कि आई एम एलिजिबल. आई डोंट नो व्हाट इट टेक्स टू बी एलिजिबल, बट होपफुली एक दिन मुझे एक्चुअली कुछ पैसे मिलेंगे और मैं टीम को कुछ मदद कर सकती हूँ. पर मैं इतनी स्वीट हूँ, मुझे लगता है सुपर चैट कोई लेगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को फॉर्म, हाँ, अगर से रश में होंगे तो शायद कोई ना कोई, जब तुम लोग पैसे कमाने लग जाओगे थोड़ा दान पुण्य करो. टीम, पता है मेरे को खुद सारे, यू आर लुकिंग सैड. हु इज लुकिंग सैड? मैं नहीं रे. व्हाई माय नो मनी, नो हनी. ओके. हाँ, आप, आई ऑल्सो नोटिस इट, बट पैसा नहीं है मैम. क्या? इट्स ओके. स्टडी सेइंग इट्स ओके. आई एम नॉट सेइंग द, सी, आई विल नेवर चार्ज द पीपल, the children who cannot afford. Please never think that this is if this is about money. But I'm just saying कि sometimes अगर से बहुत ज़्यादा questions होते हैं. Last time किसी ने, somebody just started working and they said if your super chat is ever you're eligible, they would do it. So it's for that, यार. Otherwise doesn't matter. कौन सा मेरे को 5 रुपए में मेरे जागे रे. And I'm not sad. I'm just been little unwell because I've been taking popping pills after pills for getting fine. It was very, I tell you, it was so exhausting in Bali. दिन रात, like तुम लेट सोते हो, जल्दी उठते हो, और पता नहीं इन लोग को ब्रेकफास्ट खाने का इतना भूत क्यों है, मेरे सारे फ्रेंड्स को, and I don't understand why people like to eat breakfast. मेरे से तो नहीं होता. मैं इतना जल्दी उठने में मेरे वैसे ही लेट सो रहे थे. एंड कभी कभी क्या हो रहा था, दे वुड ईट डिनर, लाइक से 10-11 बजे डिनर खाया, फिर अचानक इनको 2 या 3 बजे भूख लगती है, और फिर हम लोग, और वहां पे 24 आवर्स का कोई जगह होता है. हम एक दिन गए भी डम्पलिंग वम्पलिंग खाने. क्यों खाया? और मेरा भी, आई एम अ प्रॉपर फूडी, राइट. मेरे सामने तुमने खाना रखा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं खाना नहीं खाऊं. तो मैंने खा लिया. ओए, उस रात से जो मैं बीमार पड़ी, बिकॉज आई कैन नॉट ईट एंड स्लीप. अभी मैं जैसे बात कर रही थी ब्रिटनी के साथ. So that is also one of those things. Pay genuinely for consultation. I think whatever we can. Yes, I want to super chat. I want to do first. Okay. ठीक है. Gaurav, get well. Thank you, study. So yeah, from next year, anyone who is working, because generally my intake form always has, are you working? Are you studying? So if they are working, most probably I will charge. I don't know what. I have not decided yet. Maybe next year. Already 3 साल हो जाएंगे फ्री कंसल्टेशन को. मैं अभी भी करती हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता पैसा लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ही आते हैं. मेरे मैक्सिमम क्लाइंट्स 15 एंड अबव होते हैं. एंड आई फील, रहने दो, कोई बात नहीं. तो मुझे नहीं लगता कि माय बाली ट्रिप वाज गुड, युवराज. इट वाज इट ओके. सो देयर वर टाइम्स इट वाज गुड. For ones who don't know, Bali is divided into like Bathere areas. Okay, so there is this place, there is the beach for water sports. I didn't go because I have done it so often. इतने गेस्ट को तुम बाली लेके जाते हो, तुम करते ही रहते हो, तो मुझे वापस से नहीं करना था. मेरे बच्चे गए थे वाटर बॉम्ब एंड ऑल दैट स्टफ. फिर उन लोग एटीवी राइडिंग, मैंने एटीवी भी किया है. मैं ऑलमोस्ट एवरीथिंग मैंने बाली में कर लिया था. साइट सीइंग कर ली थी, सारे स्पोर्ट्स कर लिए थे, और दैट बनाना बोट एंड जेट स्की एंड ऑल दैट, देन रिवर राफ्टिंग, ये सब है. तो बाली में बहुत कुछ करने को है, बट मेरे लिए नहीं था इतना कुछ करने के लिए. हम फ्रेंड्स के साथ गए थे. ये मेरा, लाइक, आई डोंट नो, माय लास्ट, परहैप्स द लास्ट ट्रिप बिफोर आई मूव फ्रॉम जकार्ता. ऑफ कोर्स आई विल गो बैक अगेन अगर से किसी का कोई इवेंट हो या समथिंग, एंड व्हेन आई मूव टू दुबई. But it was very interesting because quite a few of our friends, we went together. हम लोग साथ में, हम लोगों ने पत्ते खेले, हम डिनर्स किया. But generally it was very tiring because it is peak season time. जहाँ भी जाओ ट्रैफिक, जहाँ भी जाओ ट्रैफिक. परेशान हो गए हम लोग ट्रैफिक से. So and the, like, मैं जब उबुद में रही थी, that's like the cultural hub of Bali.
तो वहाँ मुझे मेरा भाई भी रहता है, मेरा छोटा भाई, तो वो हमको बाहर लेके गया इतने सारे नए जगह में। लाइक मैंने व्लॉग बनाया था उसमें जंगल फिश करके जो था, so he took us there and so there was lot of new places which have opened, but after that जब मैं इस तरफ ऑफ टाउन आई चांगू में, इतनी ट्रैफिक थी। एक दिन मैंने डिसाइड किया कि ओके आई विल गो समवेयर एंड इट टुक मी 1.5 hours टू रीच दैट प्लेस। एक्चुअली इट शुड टेक लाइक मे बी हाफ एन आवर और समथिंग। उसके बाद मैंने नेक्स्ट 2 दिन कहीं गई नहीं, मैं होटल में थी, फ्रेंड्स से हम लोग डिनर्स आसपास ही खा रहे थे। हाँ, द डे आई वाज लीविंग आई डिड गो एंड शॉप अ लिटिल बिट बिकॉज बाली में बहुत अच्छे समर ड्रेसेस मिलते हैं, लाइक शॉर्ट ड्रेसेस एंड ऑल दैट, क्योंकि वो उधर इतनी गर्मी होती है, प्लस बीचेस होते हैं, तो लॉट ऑफ नाइस समरी स्टफ, विंटर के कलेक्शन नहीं होती वहाँ पे। तो आई वांटेड दैट बिकॉज अभी जब दुबई जाएंगे बहुत गर्मी है दुबई में, सो आई वांटेड टू बाय दोस काइंड ऑफ थिंग्स। सो आई शॉप्ड दैट। वहाँ रामायण भी दिखता है। हाँ, दे आर हिंदूज, बालीनीज पीपल आर हिंदूज, सो पर उनका रामायण हमसे थोड़ा डिफरेंट है। द वे दे प्रोनाउंस आल्सो, दे विल से रामा, दे विल नॉट से राम। देन देयर इज इवन देयर national bird is garuda, so there's a lot of Indian culture which has they have taken from, but they have adapted in different ways. कभी कभी तो मुझे लगता है वो हमसे भी ज्यादा पूजा पाठ करते हैं इतना, बट एवरी अदर डे उनका कोई ना कोई, उनके टेम्पल्स बहुत डिफरेंट है हमसे। बहुत ब्यूटीफुल कार्विंग्स होते हैं जो मोस्टली सिर्फ साउथ ऑफ इंडिया में नजर आते हैं कार्विंग्स। यहाँ पे मोस्ट टेम्पल्स आर वेरी ब्यूटीफुली मेड एंड अनलाइक Hindus in India, these Hindus can eat beef, can eat pork, so it's a very very different culture and they're very nice people. Indonesians by far, I have to still see a culture with such nice people and they're very respectful of your religion. हाँ, थोड़े बहुत तो होते हैं, हर कंट्री में होते हैं, but generally I have lived 25 years in Jakarta. I have never once faced any racism, anything like that, and बहुत पेशेंट लोग होते हैं। आई वुड से जकार्ता के लोग ज्यादा पेशेंट है रादर देन परहैप्स बाली वाले, क्योंकि बाली वाले को इतना टूरिज्म झेलना पड़ता है, दिमाग का दही होता होगा इन लोगों का, ये सब डील करते। सो या आई रियली फील दैट even I should be very thankful to the Indonesians because I am a very volatile personality. I am extremely on the go. I'm outspoken. I'm like whoa, like I'm one of those people. But मेरे में जो ठहराव आया है ना on certain things, I have to be grateful to them because यहाँ के लोग इतने patient है कि तुमको शर्म आ जाती है जब तुम impatience दिखाते हो. There's a lot I have learned from these people. Yeah, so it was a good trip overall, and I had a good time, especially with my friends and people who were with me, and family भी गई थी, बच्चे भी गए थे, मजा आया था. Overall it was nice. Only मैं बीमार होके वापस आई क्योंकि I think I was just exhausted, क्योंकि यहाँ से ही हम लोग exhausted गए थे. पहले मेरा बर्थडे था, फिर हबी का बर्थडे था, फिर हमारा फेयरवेल पार्टी था, फिर गेस्ट वे विजिटिंग, वी वर ईटिंग आउट एवरी सिंगल डे and it was too much, plus I was working every single day. By the time I went there, I think I need a holiday from this holiday only, but unfortunately I cannot take. Oh, how sweet. Thank you. Gaurav has done it. By the way, my first super chat is by Gaurav Kumar. He says, ma'am, we always love you, we are always with you. So sweet. That's so sweet. But please paisa much kharch karo. But it is very nice. This is like a historical moment in Celebrate with Rachna, where my super chat is activated, and the first person to do is Gaurav, who's also the mod, and he's been almost on every stream. So thank you, Gaurav. That was very sweet. And कौन है आपको वर्किंग वीजा नहीं लगा क्या? इंडोनेशिया इज वीजा फ्री? नहीं, मैं I was not ever working. यहाँ पे my husband is working. So if you're a boss, if you're an owner of a restaurant, yes, we have a PMA, we have all that. That is very different. I never worked. I'm doing all this free, so I've never taxes ही पे नहीं किया, तो work का का. So yes, but our restaurants and all have all the paperwork, and we have managers, we have supervisors, and yeah, we oversee. But generally मैंने
बाली में हमारे जो रेस्टोरेंट्स है वो सारे कोविड में वैसे भी बंद हो गए. Okay, I didn't get actual closure. By the time I felt distant from her and tried fixing things, she was annoyed due to my anxious behavior, and then she took the, oh, okay. So why were you anxious? I didn't get actual closures. देखो, closure is also overrated. Okay, हम उसको इतना ज्यादा मानते हैं. आपको पता है, बिफोर एक रिलेशनशिप खत्म होने के पहले बहुत सारे साइंस आते हैं, वो तुम्हारा क्लोजर है एक्चुअली. हमको लगता है कि वो साइंस नहीं है, but you already knew that you're headed towards, when you're fighting way often, you're not manawing each other way often, you're taking longer and longer breaks, and the person is very, very bizarre with you, and you are bizarre with that person, and in your mind you're like all the time saying, "Hey, when the fuck will it get over? When will I get over this person?" You are addicted to that person, so but you want to get out so desperately. These are all signs that the relationship has to be, it's like it's almost on the way of disintegrating. So I hope you understand. अरे यार गौरव भाई, once more मेरे नाम का स्टडी सिंह ज्यादा हो गया. मैम, are you shifting to Dubai या आप घूमने जा रहे हो? नहीं, I'm moving to Dubai, and it will be end of most probably not end of July, but like somewhere in first or second week of August. Yeah. And क्योंकि अभी हम लोग actually जाने वाले थे end of July, but unfortunately something has come up. मेरी बेटी का बहुत important exam है, and she has to give the exam while being in Jakarta, so थोड़ा सा postpone हो गया, which is fine. अभी इतना गर्मी है दुबई में, मैं कोई I'm not jumping with joy to go in the heat, so it's okay. मैं यहाँ पे भी ठीक हूँ. And Gaurav, I wanted to do first super chat of your channel. It's nothing in front. Thank you so much, Gaurav. That's very sweet. Hi, Bhavan Singh. कैसे हो? Good to hear from you. अच्छा बच्चा लोग, हम चले अभी, ठीक है? Next time Q&A करेंगे, और I will tell you कब next podcast हो रहा है. अभी के लिए अलविदा. कभी अलविदा ना कहना, और तो बोल रहा है उन्होंने, पर हमें कभी ना कभी तो कहना पड़ेगा. ठीक है? अपना ध्यान रखना, खुश रहना, और क्या, earn good money and travel the world. हाँ, but you know what? After traveling so much, I have literally been to so many countries in the US, in Europe, and I've been to the US, and I've been to many countries in Asia. पता नहीं एक टाइम पे मेरे में like अभी मैं बाली like कोविड से मार्च 2020 से लेकर अब तक मैंने ट्रैवल ही नहीं किया था, और मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा. आई वाज सो हैप्पी बीइंग होम. एक्चुअली मैं इतनी खुश हुई घर आकर, तुमको मैं बता नहीं सकती. ये मास्क पहन के ट्रैवल करना, और तुम लोग को जिनको नहीं पता, आई एम फकिंग शिट स्कैर्ड ऑफ टर्बुलेंस. ओके, सो जब हम जा रहे थे तो मैं और मेरी बेटी पहले गए, तो शी वॉज होल्डिंग माई हैंड, बिकॉज आई एम लाइक वन ऑफ दोज वियर्ड पीपल, बिकॉज आई गेट मोशन सिकनेस. सो ना मैं शिप में, बोट में, प्लेन में, कार में, बचपन में तो फ्लाईओवर में जाती थी तो मेरे पेट में तकलीफ होती थी, तो यू कैन इमेजिन कि अभी क्या होता होगा. सो अभी कम है, कार में नहीं होता, लाइक इफ इट्स अ फ्लाईओवर, बट आई एम टेरेबल, लाइक आई कैन नॉट गो इनटू वो जो लोग क्या शिप पे क्या बोलते हैं, क्रूज लाइनर्स पे. मेरे फ्रेंड्स कितने बार प्लान बनाते हैं ऐसा, वो शिप हिलने वाला है क्या, कितना हिलने वाला है, क्योंकि मैं एक क्रूज में गई थी जब हम लोग इजिप्ट गए थे. इट वॉज अ क्रूज ऑन द नाइल रिवर. अरे देवा परमेश्वरा, मुझे इतना, आई वॉज फीलिंग सो सिक. और द अदर टाइम I went in Hong Kong when I think China was taking over back from Britain or whatever. So हम लोग ने वो फायरवर्क्स वाली सेरेमनी के लिए हम उसमें गए थे, बोट में या किस में. मैं वहां भी बीमार पड़ गई. फिर हम लोग सिंगापुर में एक बार क्रूज लिया, मैं वहां बीमार पड़ गई, वो भी दवाई लेने के बाद. और एक क्रूज था जहाँ मैं बीमार पड़ गई थी. तब से मैंने कान पकड़ लिया कि मेरे को माफ करो, जब तक वो पूरा स्टेडी नहीं रहेगा, मुझे कुछ होता है, मैं लाइक आई कैन नॉट इमेजिन माई सेल्फ आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट ऑन लैंड. सो सब लोग में कुछ ना कुछ इशू होता है, मुझ में ये है. मेरे वजह से बेचारे मेरे फैमिली कभी क्रूज में नहीं जा सकते. हमारे फ्रेंड्स बोल रहे थे अलास्का को क्रूज जाएंगे, ऐसा दिमाग खराब है क्या, इतना दूर कौन जाए, और सारा टाइम शिप में मैं करूंगी क्या, और अगर से मेरे को
लैंड नहीं दिखा देगा तो मैं क्या करूंगी, मुझे तुम लोग ड्रग करके लेके जाओ, पता नहीं मैं क्या क्या बोलती रहती हूँ। अभी भी इधर इन लोग को ना कमोडो आइलैंड जाना था, ऐसे कैसे जाते, से एक बार फ्लाइट से फिर बोट से, ऐसे फक इट, ऐसे मेरे को फोटो में दिखा देना, मैं नहीं जा रही कहीं भी। तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि पैसा आने से तुमको नेसेसरली सिर्फ ट्रैवल करना अच्छा लगता है। आई लाइक बीइंग होम, आई एम हैप्पी बिकॉज आई थिंक मे बी मैंने इतना देख लिया और मुझे अभी आई एम वेरी कंटेंट इन लाइफ। मे बी तुम लोग अभी यंग हो, सो एंजॉय करो जब आप कर सकते हो। You will not on land on, हाँ I know exactly. So but where was gonna, अरे चुप करना युवराज, ऐसे सब मैं so you're too down to earth, that's why yes. I was like, and thank God the flight back from Bali, it was quite good. So कुछ जल्दी से वो 2 घंटे जल्दी से निकल गए, and yeah, overall it's been a good trip and thank you guys for being here. क्या और कुछ लिखा क्या आपने मैम, इज इट ट्रू यूएई डजंट टैक्स, या दुबई में टैक्स नहीं है, पर वो लोग अलग तरीके से, मुझे अभी तक उनका टैक्स स्ट्रक्चर समझ में नहीं है, पर आई नो कि इनकम टैक्स पे टैक्स नहीं है, एज मच एज आई नो, आई कुड बी रॉन्ग बट या आई हैव हर्ड इट्स टैक्स फ्री एंड दैट्स व्हाट इवन माय हस्बैंड वंस टोल्ड मी, बट आई नेवर गॉट इनटू द निटी-ग्रिटी ऑफ इट कि तू बनाते कैसे पैसा, इतना पैसा है कहाँ से और किस तरह से वो लोग अपना कंट्री चलाते हैं। कुछ तो होगा, ऐसा नहीं हो सकता करके बिल्कुल क्या जूस बनाया कि इंसान पी भी नहीं सकता, लिटरली जूस है कि फ्रूट खा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, आई कैन नॉट इवन सॉलो इट, इट्स सो बिना पानी के बनाया लगता है। सो अच्छा हमें वाटरमेलन जूस पी सकती हूँ, वो यहाँ पड़ा है। Why are you so nice? Yeah, I know I'm too nice, na? Are you ready for dry? No, I'm not ever ready for heat. Okay, not that I'm ever ready for winter also. I'm one of those people. I think मेरे लिए बैंगलोर अच्छा, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी, मुझे ऐसा वेदर अच्छा लगता है। बट मैंने सुना है दुबई में सब कुछ एयरकॉन है, इतना अच्छा एयरकॉन है कि लोग रास्ते से मॉल में पड़े रहते हैं सारा टाइम। सो आई डोंट थिंक वी हैव टू वरी। बट हाँ मैंने सुना है कि पानी बहुत गर्म हो जाता है समर्स में, तुमको कोल्ड वाटर वाला ऑन करना है, तुमको अगर से तुमने बाय मिस्टेक अपना हॉट वाटर ऑन करते जल जाओगे, इतना गर्म होता है। सो तुमको तुम्हारा हीटर ऑफ रखना पड़ता है वो टाइम पे। या आई लव विंटर्स लाइक कनाडा। अरे नहीं यार, मेरी बेटी कनाडा में वो बोल रही थी इतना ठंडी है, इतना ठंडी है, स्पेशली लाइक टोरंटो वाला साइड एंड सर्टन, आई थिंक वैंकूवर बेटर वेदर है, क्योंकि मैं जब टोरंटो गई थी तो स्नो हो रहा था और जब वैंकूवर गई थोड़ा सा वार्म था। बट आई एम नॉट सो फॉन्ड ऑफ विंटर्स आइदर, लाइक मुझे तो बॉम्बे, हम बॉम्बे आइट्स है राइट, हमको तो बॉम्बे की भी सर्दी सर्दी लगती है, तो कैन यू इमेजिन हमारी क्या हाल होती होगी। सो हम जब स्विट्जरलैंड गए थे, ओके, आई हैड टू, आई वाज जस्ट टेलिंग समवन कि हम जब स्विट्जरलैंड में जो भी जाएगा प्लीज पैक लाइट, एज एन तुमको जब ट्रेन स्विच करने पड़ते हैं एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में, अगर से यू आर गोइंग टू इंटरलाकेन एंड ऑल ऑफ दोस प्लेसेस, एंड हम लोग कभी जिनीवा से पेरिस जा रहे थे ना, मैं इतना सामान लेके गई थी, मेरे हस्बैंड इतने चिढ़ गए थे क्योंकि मुझे ना, I have this, if you people have seen me, I'm always very put together, right? So matching earring होना चाहिए, matching bag होना चाहिए, matching shoes होना चाहिए, matching jacket होना चाहिए। उसके इसमें मेरे को रियलाइज ही नहीं हुआ कि पोर्टर्स नहीं होंगे, बेचारा मेरा पति और आई ऑलमोस्ट ऑल द टाइम पोर्टरगिरी कर रहा था, मुझे बहुत बुरा लगा। तो प्लीज ट्रैवल लाइट टू यूरोप, कोई तुम्हारा सामान उठाने के लिए नहीं, खुद को उठाना पड़ता है। एंड उसके बाद मैंने सीखा, पर इतना नहीं सीखा, सो अब नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगी कि डिड आई रियली। अभी मैं बाली भी जा रही थी तो मेरा सिर्फ बाली का बैग, ओके, जस्ट 1 वीक, एंड माय आई सेड आई टोल्ड माय हस्बैंड इज 25 kgs, he said what the fuck have you taken for 1 week? क्योंकि यू नो लाइक तुम्हारे बैग, तुम्हारा सब कुछ, इट हैज टू बी परफेक्ट। So yeah, I don't travel light. Yeah. So if your daughter is working part time, 20 hours in Canada to pay fees for you. No, I paid. I am not allowing my daughter to work till she is not finished her studies, or she can. There is a co-op program. She goes to Waterloo, and in co-op आप studies का break लेके पढ़ाई करते हो, internship करते हो, ताकि तुमको फिर better job opportunity मिलती। Waterloo का curriculum is one of the hardest curriculums. एंड इट इज नॉट इजी। हमने ले तो लिया, बाद में रियलाइज हुआ कितना टफ। नहीं, वी पे फॉर आवर चिल्ड्रन, हम लोग
touchwood, by God's grace, we can afford to pay for our children. And बस एक पेरेंट वही विश करता है कि हम खर्चा करने को रेडी है, बस बच्चे पढ़ाई कर लें क्योंकि उनकी फ्यूचर के अच्छे रहे। हम तो नहीं रहेंगे। आई होप दे रियलाइज दैट। एंड तुम लोग भी, चाहे कोई अच्छा कॉलेज हो ना हो, तुम्हारे पेरेंट्स पे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो भी, अपने एजुकेशन पे जरूर ध्यान देना, बिकॉज ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आजकल जॉब्स तो इतने सारे क्रेडेंशियल्स होने के बाद भी इतनी मुश्किल से मिलते हैं, तो ऑल ऑफ यू ध्यान से पढ़ना। नो, शी इज नॉट वर्किंग पार्ट टाइम। इतने जल्दी चले जाना तो गलत। मैं कहाँ अभी तुम्हें अभी भी, हाँ। और पाजी आप कनाडा से हो क्या? 25 kg, आई नो 25 kg was just my bag. Okay, Atlantis, the Palm restaurant. Yes, I've been to all this, by the way, when I was first there, but we are planning to do it, but not to it. Like yesterday we were planning Atlantis again, and I was like, पागल कुत्ते ने काटा है। वो गर्मी में अगर से मैं वो जगह चली गई, पता नहीं मुझे क्या होगा। तो we'll see how it goes. Okay, but 99% student work part time, and yes they do. A lot of my friends, not my friends' kids, my daughter's friends, they say कि in the US, sorry, in Canada and most of these places, तो parents क्या करते हैं, I think part कुछ payment करते हैं पर tuition fees and all that, बच्चे part time काम करके करते हैं। But I want my daughter to focus on her studies. उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है उसको काम करने के लिए, अभी उसको फोकस करने। जब अगर से हम कर सकते हैं तो क्यों नहीं, नहीं कर सकते तो बात अलग है। बट अभी 2 ही बच्चे हैं हमारे, अगर से हमारे, see, I never got a chance to study. My husband never got a chance to study because I got married really early. My father passed away early. My husband was the youngest, and my father-in-law was not financially so strong. So my husband had to give up studies at 21 and start working. So हमारा ये है कि अगर से हमारा पूरा ड्रीम ऐसा रहा है कि जो हमको नहीं मिला है वो हम हमारे बच्चों को देना चाहते हैं। और आई होप उनको इतनी समझ है कि दिस इज द बेस्ट गिफ्ट वी कैन गिव इज एजुकेशन। एंड इंडिया में बहुत होता है कि हमारे घर में भी हुआ है, हमारे अराउंड अस ऑल्सो, इंडिया में बहुत ऐसा होता है कि एक लड़की की शादी हो जाती है, अगर उसका मैरिज ठीक नहीं चलता है, उसके पास घर नहीं होता है वापस आने के लिए, क्योंकि पेरेंट्स are either staying with the son or the daughter-in-law is going to make an issue and the daughter has no place to go. So that is another thing we have done for our children. दोनों के लिए we are leaving one house each. तो God forbid कभी जिंदगी में उनके पास कभी भी, who knows, what if God forbid कि वो कमा ना सके या उनके लाइफ में कुछ बहुत अनटूवर्ड्स हुआ है, जैसे I had to go through that where एक दिन सब कुछ था और फिर नेक्स्ट दिन कुछ नहीं था। अगर से गॉड फॉरबिड उनके साथ कभी ऐसा हुआ तो हमको हमारे बच्चों के लिए इतना छोड़ के जाना है। आई थिंक एक सिर्फ पेरेंट्स बनना इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई नो लॉट ऑफ इंडियन पेरेंट्स इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, आई नो तुम मेरे को सुन के बोलोगे करके, क्योंकि मैंने भी ऐसी जिंदगी देखी है जहाँ पे मेरे पेरेंट्स के पास कुछ खास नहीं था और हमारे पास कुछ खास नहीं था। हमने बहुत हार्ड वर्क से वी हैव कम हियर। सो अगर से मैं कर सकती हूँ अपने बच्चों के लिए, सो बी इट। अगर से वो नहीं उसको यूज करके कुछ लाइफ में नहीं आगे बढ़ते, वो उनकी डेस्टिनी है, वो उनका कर्मा है, वो उनका लाइफ का जर्नी है, वो उनका पाथ है। बट हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, and it should be a pleasure to take care of your children. I don't look at it like children are like such liabilities. बट यस, हम अपने बच्चों को स्पॉइल भी नहीं करते। हम लोगों का बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी होता है कि बच्चे ने कुछ अचीव किया तो उसको हम लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है अभी यू कैन डू दिस, वी विल बाय यू दिस, विल बाय यू दैट। ऑफ कोर्स माय हस्बैंड स्पॉइल्स माय डॉटर अ लिटिल बिट। आई थिंक वो फादर डॉटर का जो ब्यूटीफुल बॉन्ड होता है ना, कि बेटी सिर्फ डैड ऐसे करेगी तो फादर एकदम से पिघल जाता है। मैं जल्दी पिघलती नहीं जब वो कुछ बोलती है। ऐसे नहीं, तूने क्या किया पहले बता, कितना, what have you done to get this? So I am little bit more but yeah, मैं भी पिघल जाती हूँ अगर से बच्चे को कुछ रियली चाहिए। टचवुड हमारे बच्चे इतने स्पॉइल्ड नहीं है, थोड़े बहुत तो है, क्योंकि जब कनाडा जाते हैं तो मेरा भाई बोलता है कि आ गई तेरी स्पॉइल्ड बच्ची क्योंकि इनको, हमारे बच्चे यहाँ जो रहते हैं बहुत अलग होते हैं जो अमेरिकन बच्चों से। इन लोगों को
वहाँ अमेरिकन बच्चे अपना रूम साफ करते हैं, घर में मदद करते हैं, सब कुछ करते हैं। यहाँ के एशियन बच्चे माँ पे छोड़ देते हैं या स्टाफ पे छोड़ देते हैं, उनको नहीं आता है ये सब करना। तो बट माय डॉटर हैज बिकम सो रिस्पॉन्सिबल सिंस शी लेफ्ट फॉर कनाडा। लाइक एक टाइम था हार्डली कुछ करती थी, लाइक उसको सब कुछ नाक के नीचे मिलता था। अब यू कैन सी द क्या ट्रांसफॉर्मेशन होती है जब इंडिपेंडेंस भी आती है, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है बच्चों की। युवराज ब्रो, इट्स रियली क्या 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 क्रिंज है, क्या लिखा है, एक मिनट। मैम यू नो आज मैंने अपने घर का विंडो मिरर तोड़ दिया, पता है क्यों? क्योंकि जिस शीशे में आपका चेहरा है भगवान या इट वाज क्रिंज ज्यादा हो गया। एंड बाय द वे मैं मैम हूँ ना, तुम अपने, और बाय द वे डोंट हर्ट योरसेल्फ, नॉट दैट तुमने किया, आई एम श्योर कि आप ऐसा नहीं कर रहे हो, बट ठीक है। But it's okay, never mind. Yuvraj, thank you, Yuvraj. You are awesome, ma'am. Okay, don't get married unless you're financially well-to-do. Both the partners should be taking care of each other. It's not just the guy. So I look at it, Gaurav, genuine compliments. नाम की भी कोई चीज होती है नहीं. Generally, Rohit, Gaurav is pretty genuine, so I don't think it's like that. But ठीक है, ये थोड़ा Bollywood cringe हो गया, but चलो ठीक है, कोई बात नहीं. यार वैसे ही लिख दिया, शायद मैम के चेहरे पे स्माइल आ जाए, या डोंट वरी. कोठी बंगला बंगला, हमारे पास भी कोठी बंगला कभी नहीं था. हमने we also came from a one bedroom kitchen from a village, but we हार्ड वर्क करो, और कुछ चीजें डेस्टिनी पे भी छोड़ना ही पड़ता है. इट्स नॉट इजी, यू नो. Yeah, I've heard India is very humid and very hot. मैम सर पर पड़ती है तो सब करना पड़ता है if you're moving on. Yeah, I even when I was just telling Brittany, जब मैं US जाती हूँ, मैं like मेरे आंखें ऐसे like I'm like fuck, am I supposed to like clear after I like मुझे आदत नहीं है. अच्छा खाना भी बनाना पड़ता है, अच्छा साफ करो टेबल, बेड बनाओ खुद का. मैं मेरे भाई को बोलती थी, जैसे तूने मेरे को इधर क्यों बुलाया, तू तो छुट्टी के लिए बुलाया था, मेरे को इधर काम करना पड़ता है, इससे बेटर तो मेरा घर है, मेरे को काम नहीं करना पड़ता. तो बेचारा इतना स्वीट है ना, उठ के सुबह में फिर मेरे लिए स्मूदी बनाएगा, पहले से ब्रेकफास्ट अरेंज करेगा. फिर मुझे थोड़ा बुरा लगता है कि अरे चल यार, थोड़ा इतना भी एंटाइटल्ड नहीं होना चाहिए. तो फिर हम लोग टेबल क्लियर करते हैं. मैं वो डिश वॉशर में डालना पड़ता है, तो सारा उसको रिंस करना पड़ता है एंड ऑल दैट. So yeah, I have learned to do it, but out of choice, एक है ना, आउट ऑफ चॉइस अगर मेरे को यूएस या यूरोप में रहना पड़े, मैं कभी ना करूँ. जब तक लाइक लिटरली मेरे को कोई ऐसे गले से पकड़ के वहां लेके ना जाए, मैं नहीं जाएगी. मैं भले थोड़ा पैसा कमाऊं, बट उसको एंजॉय करूं. मुझे नहीं करना है. मैं आई थिंक आई एम वेरी लेजी एज अ पर्सन, एंड आई लव वर्किंग. कैन यू इमेजिन काम करते करते, लाइक अभी जैसे रिसेंट कॉल्स ऐसे हो रहे, क्लाइंट कॉल्स, कि अच्छा आई एम पैकिंग एंड आई एम मूविंग, सो यू हियर सम पेपर, यू हियर सम नॉइस. सो दैट्स, आई कैन नॉट इमेजिन हाउ पीपल वर्क. एंड उनके बड़े बड़े घर भी होते हैं, कुत्ते भी होते हैं. हम तो कुत्ते फिर भी नहीं रखते स्टाफ अप होने के बावजूद. मेरे पास तो इतना ये है ही नहीं कि मैं ये सब मैनेज करूं. इट्स गुड ट्रेनिंग, या इट इज गुड ट्रेनिंग. ओके मैम, वी आर अंडर वाटर इन असम. ओह, आई एम सो सॉरी. आई होप युवराज एवरीथिंग गेट्स सॉर्टेड इन असम, एंड स्टे सेफ बच्चा लोग. ओके मैम, माय पेरेंट्स आर डूइंग द बेस्ट, प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है पढ़ाई में आई एम नॉट डूइंग माय बेस्ट. कारण समझ नहीं आ रहा है. इट जस्ट फील्स बैड. देखो, कभी कभी हम लोग पढ़ाई में इसलिए नहीं करते क्योंकि शायद वो सब्जेक्ट इंटरेस्ट में नहीं है. शायद हमको कभी कभी रियलाइज भी नहीं होता कि what we are going to do now is going to impact our life later. हम थोड़ा easy ले लेते हैं ये सोच के कि चलो ठीक है, कुछ ना कुछ हो जाएगा. Sometimes you could be burnout. Sometimes it just that you're just not cut out for studies. There are so many reasons that one would not want to study, right? And it could also be just a phase and you will overcome it. Like I don't remember मेरी पढ़ाई from like say, मेरे को वैसे भी ज़्यादा याद नहीं, बट आई रिमेम्बर मैं 10th के बाद थोड़ा ज़्यादा सॉर्ट आउट हो गई थी. उसके पहले मुझे याद भी नहीं मैं क्या पढ़ती थी, कौन. वैसे भी हमारे पेरेंट्स सेपरेटेड थे, तो कोई पढ़ाई में किसी को कुछ क्या हो रहा था हमारे लाइफ में हमको भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता था. बट धीरे धीरे लाइफ में समझ आ जाती है. एंड आई होप स्टडी सिंह तुमने ऐसा नाम रखा है, यू नो, तो
अगर से आपने डिसिप्लिन लाया, हार्ड वर्क लाया, मुझे पता है सोनू, फिर से तुम आए हो, मेरी आईक्यू कभी ज्यादा नहीं थी, ठीक है, आई वाज अ मीडियोकर स्टूडेंट, बट आई वाज हार्ड वर्किंग. आई कैन सी माय सन हैज हाई आईक्यू, माय डॉटर इज वेरी हार्ड वर्किंग. सो उसकी भी आईक्यू ठीक है, बेटी की, बट वो ज्यादा हार्ड वर्किंग है. वो बहुत ज्यादा, जिनकी आई, सबकी जेनेटिक आईक्यू अलग होती है, राइट. आई नो माय हस्बैंड इज गॉट अ वेरी हाई आईक्यू. आई एम लाइक, हमारे फैमिली में कितने सारे हम लोग हैं जो, but we all are doing well because हमने hard work की, we found out what we are good at, we worked around it. So it's all about that, and I hope study सिंह की तुम, the good thing is that you are aware that आप enough नहीं कर रहे हो, start doing it, because एक God forbid, आपको पता है हमारे पेरेंट्स हमेशा हमारे साथ नहीं रहेंगे, तो ये आपके लिए अच्छा होगा कि आप अभी से ध्यान दो और डिसिप्लिन लाओ. भले एवरीडे थोड़ा 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 करो, बट करो, डोंट कंप्लीटली गिव अप. ठीक है. अच्छा चलो बाबा, बच्चे लोग केमिस्ट्री, या केमिस्ट्री माय डॉटर इज टेकिंग केम, सो शी फाइंड्स इट इंटरेस्टिंग, and so each one to their own, like I was never a PCM student. Yeah, my daughter is taking genetics also, so yeah, sorry, genetic hai. But I'm interested in lot in studies, and PCM is love. Okay, that's great. How to handle the shame and awkwardness of repeating 12th, and how to tell people when they ask for marks. Okay. हमारे इंडिया में इतना प्रेशर डालते हैं टू कम 90% एंड अबाव, इतना प्रेशर डालते हैं कि इंसान फेल ही नहीं हो सकता. एंड एक इंसान रिपीट कर ले तो इट्स लाइक सच अ स्टिग्मा अटैच. ये पूरी सोसाइटी का जो माइंडसेट है ना, कि आपकी एक गलती, आई डोंट नो इफ इट्स इवन अ फकिंग गलती, बट लेट्स से तुम इसको सोचते हो कि समथिंग, इट्स लाइक अ सेटबैक, राइट. People don't want to believe that. So what, that if you failed, why can't you try again? आप, by the way Sujal, do you know how many CA students I get? कोई लोग तो 6 7 8 बार उसको दे रहे होते हैं. वो कैसे हैंडल करते हैं? तो आपको वैसे हैंडल करना है कि आप फेल हुए, किसी और का तो कुछ गया नहीं, राइट. आप ही का जिंदगी है, आप उसको संवारोगे, आप उसके लिए पढ़ाई करोगे. इसके लिए थोड़ा सा थिक स्किन लाना पड़ेगा कि पहले, till you do not rise in your own eyes. I know it is sounding little poetic, but it is true. Till you do not rise in your own eyes, you'll always feel low in other people's eyes. थोड़ा ये गार्ड बांध लो. जब तक अपने नजरों में तुम गिरे हुए रहोगे, जब तक तुमको लगेगा कि फेल होना गलत बात है, मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, मैं फेल हो गया, मेरी जिंदगी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, मैं कितना गधा हूँ, मैं कितना स्टूपिड हूँ, आई एम अ लूजर. नो, आपको ये नहीं सोचना. पहले अपने दिमाग में डालो कि एक तो फर्स्ट फाइंड आउट करो तुम फेल क्यों हो. अगर से फेल हुए मतलब आपने या तो पढ़ाई टाइम पे नहीं की, इस बार आप फिर से, यार लोग खून खराबा ऐसी चीजें करके जेल जाके सेकंड चांस में आ जाते हैं. आपने कुछ ऐसा कोई पाप नहीं किया है. यू जस्ट मे बी वर नॉट प्रिपेयर्ड इनफ, मे बी यू डिडंट डू इनफ preparation, studies, and weren't as dedicated as you should be. I'm guessing that is the only reason one fails. I'm not sure, or you were sick, or something else happened that you failed. So look at it, become self-aware, make that change, and then try again. Now, if you fail again, then you need to ask yourself, are you sure तुम correct stream में हो? 12th तक आई थिंक 11th में ही हम डिसाइड कर लेते हैं हमको आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो भी लेना है. Maybe you've taken the wrong stream, then you switch. Even then you don't give up. There are a lot of people who are college dropouts who are super wealthy and super successful. This one class, iske marks shouldn't define who you are, because we are not just ye exam, this one exam. This is your entire life. This is the entire you. From you being a son, to a friend, to a brother, to a student, to being an important human being. Do not let just this one exam define you. Till तुम अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाओगे ना, तुम दूसरों के नजरों में कभी आंखें मिला नहीं पाओगे. तुम्हारे नजरें तुम झुकाओगे. तुमको झुकाना नहीं है, क्योंकि तुमने कोई गलती नहीं की है. आपका एक सेटबैक है. हम सब इतने बार
कभी एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं, कभी रिपीट करते हैं, कभी बिजनेस डील्स में से आप नहीं वर्क करेंगे, कभी आपको ऑफिस से निकाला जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। as long as you understand that this is all a part of life, सब लोग सुपर इंटेलिजेंट नहीं होते, बट आपको हार्ड वर्किंग बनना है अभी। और कोई आपसे मार्क्स मांगते हैं तो change the topic. If you cannot give the answer, say I am repeat till you do not become comfortable. You will not teach the other person to become comfortable with it. You are shying away, so what if you didn't pass? Big shit. मैंने प्रीलिम्स में मैंने अटेंड ही नहीं किया, तो हर सब्जेक्ट में तो वैसे ही फेल हो गए, ठीक है। तो यू हैव टू फर्स्ट, एज आई सेड, एंड यू डिसाइड कि तुमको सच्चाई बतानी है कि नहीं बतानी, क्योंकि जब तक तुम उनसे झूठ बोल रहे हो तो तुम अपने आप से भी झूठ बोल रहे हो। जब तुम उनको ऐसे बोलते हो तो तुम में वो अनकंफर्टेबलनेस आ रही है, राइट, कि अरे आई हैव नॉट पास्ड। Till you do not become comfortable, the samne wala will treat you as if you have done something really majorly wrong. Don't let them do that. It is just one exam. And yes, if you put hard work, if you start again, start fresh, that is the concept. To be truly successful is not your marks. To be truly successful is a person who is resilient. गिरना, खड़े रहना, गिरना और फिर से खड़े रहना और give up नहीं करना, उसको, वो इंसान सक्सेसफुल कहलाता है। जो सिर्फ 12वीं में पास हो वो इंसान सक्सेसफुल नहीं है। सक्सेस के बथेरे मीनिंग्स होते हैं। जो आप लोग सोच रहे हो वो अनफॉर्चुनेटली सारा तुम्हारे दिमाग में ब्रेन वॉश करके तुमको बचपन से डाला है कि तुमने 90% आना है, यही करना है, डॉक्टर, इंजीनियर, फलाना धमका बनना है, नहीं तो तुम सक्सेसफुल नहीं हो। दैट इज नॉट ट्रू। सक्सेस could mean how you control how you cope with your stress, how you learn to control things around you and give up things you cannot control, how to be content in life, how to not have a pity party, how not to be negative and pessimistic. ये सारे core qualities of a successful person होते हैं। और one of the most important is to be peaceful. अगर से तुम peaceful नहीं हो, अगर से तुम content नहीं हो, अगर से तुम resilient नहीं हो, तुम किस एंगल से सक्सेसफुल बने? तो ये जो तुमने डेफिनेशन तुम्हारे सक्सेस का बना रखा है कि 12वीं के मार्क्स से मैं सक्सेसफुल होता, नहीं, दैट इज नॉट ट्रू। और दुनिया को ये तुमको बिलीव करने मत देना। बट हैविंग सेड दैट, मेक श्योर दैट यू वर्क हार्ड, ओके, एंड डोंट गिव अप। और आई थिंक, आई डोंट नो इफ आई हैव बीन इन you have been in touch with me, you can always come to me and I will give you some study resources, ठीक है। और ऐसे इतना जल्दी हार नहीं मानते बच्चा, कोई बात नहीं, लगे रहो, ठीक है। मुन्ना भाई, तुम 3 Idiots देख लो, ठीक है। वी डोंट गिव अप, मार्क्स इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ, एंड आई एम श्योर इफ यू वर्क हार्ड यू विल ऑल्सो गेट सॉर्टेड लेटर ऑन इन लाइफ, ओके। हार्डवर्क का टॉपिक लाना इज लाइक बीटिंग उसेन बोल्ट, मैन, दैट्स इम्पॉसिबल। सी, तुमने ऑलरेडी लिख दिया दैट्स इम्पॉसिबल, आपसे नहीं होगा, तो आई विल नॉट इवन डिस्कस इट विथ यू। यू हैव गिवन अप। आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई टू कन्विंस समबडी हु वांट्स टू make excuses. What do you think? What do we rest of us do? तुमको लगता है हमारी IQ आइंस्टाइन जैसी है? हमने ऐसे ही लाइफ में बिना IIT गए, बिना IIM गए, हम लोग कैसे लाइफ में पैसे कैसे बनाए? ये सब बकवास है यार। तुमको बकवास में बिलीव करना है कि हार्ड वर्क डजंट मीन एनीथिंग एंड इट्स इम्पॉसिबल, प्लीज आप रहने दो, फिर आपसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि this is not, life is not about just your marks, life is not just about your IQ, you have to work hard. A person could come from IIT and still, आपने अगर से मेरा वो पॉडकास्ट देखा जिसमें वो एक कोच आए थे और वो कह रहे थे कि उनके पास IITians भी आते हैं, क्योंकि पर्सनालिटी नाम की कुछ चीज होती है, हार्डवर्क कुछ नाम होता है, ये सब चीजें मैटर करती है। आपका पूरा entirety of you, not just your IQ makes you. What about your emotional intelligence? Are you a team player? Are you a caring person? Are you thinking out of the box? So this doesn't only require IQ, okay? Anyway, तुम्हारे साथ मैंने पहले भी इस बात पे बहस हुई है, तो छोड़ो। IQ वालों का अंदर पता होता है कि बेटर बनाना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज। हमारे पास इतना IQ नहीं था, बट हम फिर भी ठीक थे। लेट्स नॉट इवन गेट इनटू इट। यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू जस्ट गिव अप, तो वो तुम्हारी पर्सनालिटी है, उसके साथ मैं आर्ग्यू नहीं करना चाहती, ठीक है। मैम 2 साल पहले बहुत फ्लो में था, जैसे वर्ड्स पानी की तरह बहते थे, किसी से बात करो तो वो स्टेज चली गई, कैसे बनाए वो फ्लो। देखो, कभी कभी ऐसा होता है, लाइक
for me, for example, because I have to do counseling every single day, and I've spoken so much non-stop. There are times I don't talk much. Okay, so it's okay. Read up, be a good listener, give your points when it's needed. Flow में जो इंसान अभी ये तो मुझे करना पड़ता है, मेरे पास चॉइस नहीं है. बट अगर से कॉन्वर्सेशन में सिर्फ तुम बात कर रहे हो, बाकी सिर्फ सुन रहे हैं, कॉन्वर्सेशन अच्छी नहीं जा रही है, क्योंकि उन्होंने भी इनपुट देना है, आपको उनसे भी इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन लेना है. वो यूट्यूब का पॉडकास्ट नहीं है कि आप फ्लो में बात करते गए, अपने आप को इधर जूम पे देख के करना पड़ता है, वो अलग बात है. ठीक है. और क्या था? हाय उस्मान, आई एम गुड, हाउ आर यू बच्चा? Ma'am, I forgot to tell you that I joined your Discord server. There I met all the people, very nice. Okay. But few really bad. But see, कोई भी लाइफ में अच्छा बुरा साथ साथ जाता है. Don't expect these people to be your like best buddies or your soulmates. आप उधर जा रहे हो इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन के लिए, कभी शेयर करने के लिए, कभी आपको, और जब भी नेगेटिव एक्सपीरियंस होगा उसको भी अच्छे से लो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी helping you later in the future when you are going to meet such kind of people. सब अच्छे नहीं होते और सब बुरे भी नहीं होते. ठीक है. और बुरे से इतना डरो मत और भागो मत. इट्स ओके. ठीक है. अभिनव, नाइस टू सी. 0 डिसलाइक नहीं, डिसलाइक तो वैसे ही नहीं होता. बाय द वे, if you're not aware, YouTube took off the dislike button. Okay, Sujal, I'm so happy that you're doing better. Have you been in touch? If not, please contact me. I'm not very sure. Your name sounds very familiar. I could be in touch with you. I'm not very sure. अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम लगी मैम, रैट रेस खत्म हो गई फाइनली. अरे हाँ, 90% लाने पड़ते हैं पहले तो. हाँ चलो अच्छा है. Okay ma'am, whenever whoever that person irritate you, I do comment that you are doing a lot for us, many things, because I want you to remind that you always remember that you always. Thank you so much, Gaurav. Yeah, you saw, right? You were here when that person kept coming and abusing me and making these IDs of my children, and पता नहीं क्या मिलता है इसको. चलो छोड़ो यार. ये मैम, मैंने बहुत सारे से बात किया जो ड्रॉप लेते हैं जेई नीट के लिए. जैसे इस बहुत स्ट्रेस देता है सोसाइटी, बट दे जस्ट कि बस 1 साल की शांति से पढ़ाई करो. या करेक्ट. मेरा भाई भी 149 स्कोर जीनियस लेवल, बट स्टिल पूरा आगे चला गया. But still he is bad at study. The reason he doesn't. Exactly. Thank you, Anonymous. I was busy, इसलिए थोड़ा लेट आया. I'm so sorry. कोई बात नहीं उस्मान. I'm glad you're here. उस्मान को punishment देके super chat करो. With an average or above average IQ, you can literally crack all exams with immense hard work. Yeah, correct. Exactly. I remember the person who came for the banking exam, जिसने उनका भी अभी भी एक reel आया था, and he said is to be a below average student or an average student, and he worked hard and he cracked those exams. So ये सब बकवास बातें हैं करके, बिना हार्डवर्क आपको कुछ भी लाइफ में मिलता है. Yeah, Sean DeMello. Okay, hi Sean, never seen your name here before. Welcome to Celebrate with Rachna. तो ठीक है सोनू, अगर से आपके IQ नहीं है तो आप कुछ और करो यार. कितने सारे आपको प्रोफेशंस, मैंने एकेडमिक बर्नआउट में इतने सारे प्रोफेशंस है जिसमें पढ़ाई की जरूरत नहीं है. जाओ करो. सारा टाइम कंप्लेन करके क्या होगा? नहीं है ना IQ का. अभी चोरी करके मार्केट थोड़ी करके लेके रख के बुद्धि में डाल दिया, नहीं है. Now what are you going to do? Instead of solving your problem with adding more problems, abhi you already, according to you, it's a problem. Okay, it's not according to me, because I have a full family and lots of friends who do not have high IQ, yet they are doing well because they have put hard work or they have chosen the right professions. Now let's assume you look at it as a problem. Now you have one problem. Now your way of solving the problem is, let's add one more problem. By what? By complaining about it constantly. Every stream you complain. You are so bitter and so you pity yourself too much. Stop pitying yourself. It is okay. We got it. कि नहीं है आपके high IQ. अब आप क्या करोगे? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो. इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम को प्रॉब्लम से बीट करने की कोशिश करो. उससे कुछ नहीं होगा. प्रॉब्लम जो इतना सा था अभी इतना बड़ा हो जाएगा. नाउ व्हाट कैन यू डू? व्हाट प्रोफेशंस कैन यू चूज and learn to be content. क्या लोग जिनके let's say उनको educational chances नहीं मिलते, opportunities नहीं मिलते, ड्राइवर्स है, सेल्समैन है,
सारी शॉप्स में हो, या फोन का सिम कार्ड बेच रहे हो, या किसी टूर ऑपरेटर के ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी के असिस्टेंट बने हैं. There's so much to do. There is so much, so many professions if you put your head to it. ठीक है? So आपको instead of complaining, start looking at what can you do to fix this issue. Don't keep complaining, because then you become bitter. Yes, nobody says कि सारा टाइम खुश रहोगे, सारा टाइम wow, life is a bed of roses, कितना मजा है, wow, ताली. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. बट अगर से हम सारा टाइम नेगेटिविटी, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसे इंसान ज्यादा दुखी रहते हैं लाइफ में, जो सारा टाइम कंप्लेन करते हैं. दैट इज, ये आपको शायद बड़े होने के बाद मेरी बात तब समझ में आएगी कि लाइफ में we have to compromise, we have to make do. This is the hand that you have been dealt. It doesn't mean that you will not get new cards along the way to improve your game, but stop complaining about the hand that you have been dealt. You cannot change anything about it. We all have no control over our genetics, no control where we are going to be born and what our parents are going to do or how they are going to raise us. But we do have a chance, we do have an opportunity to change our life later if we stop complaining about it. Okay, Rohit has written, wow, ma'am, your patience is superb. अरे 2 आराम से बैठे आप, जगह क्या, मैं आपके जगह होता तो इतनी कम ऑडियंस देखकर नहीं. ऑडियंस कम होने से भी एक बुरी बात नहीं है, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि तुम लोग के सारे कमेंट्स पढ़ के सारी चीजें तुमको मैं आंसर तो कर सकती हूँ. अगर सिर्फ 200 मैसेजेस आएंगे तो फिर तो सिर्फ सुपर चैट होगी, राइट? तो इन अ वे इट इज गुड. आई लव इंटरेक्टिंग. फॉर मी इट, the likes, the dislikes, the numbers, they never play with my head. Understand? You have to be that emotionally so headstrong that you try to make a difference in your way, in the tiniest, minutest way possible in anybody's life. Okay, so don't look at all this. और मुझे तो फर्क भी नहीं पड़ता. I really like a girl on the internet and spending a lot of time thinking about her, and I know I'm just wasting my time. Relatives, you know you're wasting my time. So stop fucking wasting your time. When you know कि उधर दाल नहीं गलने वाली, आप प्रेशर कुकर लगा के बैठे हो, deal with the consequences. So कुछ चीजें मेरे बोलने के बावजूद भी आप लोग करते हो, क्योंकि लाइफ में ऐसा होता है कि हमको अपने मिस्टेक से सीखना पड़ता है, अपने गलतियों से. आप भी सीख लोगे, आपकी भी बुद्धि जो फिलहाल भ्रष्ट हुई है, तुम भी लाइन पे आ ही जाओगे. डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम विल सी. गौरव कुमार इज अब्यूजिंग. क्या क्या क्या? एक मिनट. ओके, एक मिनट. कहाँ थे हम लोग यार? ओए भगवान, किधर थे? बहुत, एक तो ये ना इतना फास्ट. सोचो मैं, तुम अभी इस इतने कम लोगों में मैं चैट को फॉलो करने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है. ओके, शॉन का पढ़ लिया था. ओके, ये रोहित का भी पढ़ लिया था. युवराज आया. ओके, तुम्हारा भी युवराज मैंने आंसर कर दिया. या तो डू बी एन एनिमेटर. सो तुमको मालूम है कितने मूवीज में एनिमेटर, वीआर इफेक्ट्स, ये सब जो स्पेशल इफेक्ट्स में एक्स्ट्रा कोर्सेज करके वहां जाओ ना, उसके लिए आप, आई एम श्योर यू कैन डू इट. After talking to ma'am, I feel I've changed in myself. So I'm so happy, Baban. I hope the change is good. I think next time we'll see. Why is Gaurav Kumar abusing? सोनू भाई क्या हर जगह आई क्यों? वो सोनू को थोड़ी, I'm depressed, I'm on. Okay, हाँ, it's okay. You can complain, बेटा, but don't overdo it. You're setting yourself up for failure by saying ये impossible है, वो नहीं हो सकता. तो ठीक है, आप थोड़े डिप्रेस्ड हो, पर अभी आपने देखा हमारा सेशन, हम मेडिसिन पे सिर्फ डिपेंडेंट नहीं हो सकते. हमको अपने लाइफ में चेंज लाना पड़ता है. ठीक है, हमको खुद काम करना पड़ता है, रोज स्केड्यूलिंग करनी पड़ती है, डिसिप्लिन लाना पड़ता है. वो मेडिसिन नहीं ला सकती. एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, म्यूजिक सुनो, कॉमेडीज देखो, नए हॉबीज स्टार्ट करो. अभी किसी ने पूछा गौरव ने पूछा व्हाट आर माय हॉबीज. कोई हॉबीज ही नहीं है मेरे को. क्या हॉबी है मेरा? आई डोंट हैव अ हॉबी, ऑनेस्टली स्पीकिंग. मेरे को टाइम नहीं होता, बट मैं डांस कर लेती हूँ जब मेरे से होता है, जिम चली जाती हूँ जब टाइम होता है. मुझे कार्ड्स खेलना अच्छा लगता है. अभी मैंने नेटफ्लिक्स फिर से थोड़ा थोड़ा देखना स्टार्ट कर दिया. मैं सूट्स देख रही हूँ अभी फिलहाल. सो you don't see positive, sit down and write every day. There was a new research, I just read it the other day. It
it helps a lot. Okay, every single day, do it for next like 1 month and see how it impacts your brain. भाई क्या पता हमारा IQ इतना अच्छा खराब हो गया. Okay, मैम, how to make balance between dating and studies. किसी गरीब घर के बच्चे को, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, वो मेरा सॉन्ग वाला वीडियो था, हाउ टू बैलेंस डेटिंग एंड पढ़ाई. प्लीज उधर देख लो, तो आई डोंट हैव टू रिपीट माई सेल्फ. When you will be conducting next Zooms. Hi there, how are you? Good to see you here. Maybe next week I'll try. I'm trying to get a date of a fitness coach, and if उनका नहीं होता तो फिर मैं Q&A तो कर ही लूंगी. और एक इंसान के साथ मेरी एटिकेट कोच के साथ बात चल रही है, और भी कोई है मेरे को याद नहीं आ रहा, तो I will do that. Okay. Next क्या? I can feel okay. नाइस फीलिंग यार, वो बताओ यार, मजे मत लो, सोए. ओके, कोई किसी का यू नो, आई एम गोइंग टू ट्राई. ओके, देखो, तुमको जो ट्राई करना है यहाँ पे ये मत करो, ठीक है. मैं आई डोंट, मैम इज इट पॉसिबल टू हैव लाइफ लाइक हार्वी स्पेक्टर? होता भी होगा हार्वी स्पेक्टर जैसा लाइफ, बट रियली ऐसा कुछ इतना ग्लैमरस तो कोई काम नहीं होता होगा, बट स्ट्रेस भी कितना होता है, राइट? ये सब डोंट लुक. मैम, व्हाट इज योर सीक्रेट ऑफ योर ग्रो? यूट्यूब फिल्टर्स एंड मेकअप. यूट्यूब फिल्टर नहीं, सॉरी, जूम फिल्टर एंड मेकअप. क्या? एंड हे भगवान, मेरे को भी हॉबीज नहीं है. सेम पिंच मैम, आई नो. सो व्हेन इज द नेक्स्ट विथ श्वेताब? ओ ओके, किसी ने पूछा नेक्स्ट मेरा लाइव कब है. मेरे को, मैंने श्वेताब का नाम नहीं पढ़ा. हाँ, धैर्य ने मेरे, थैंक गॉड, मेरे को श्वेताब के बारे में नहीं पूछा. तो दर्श, मैं श्वेताब के साथ फिलहाल कोई प्लान नहीं है, शायद 1 साल भी ना हो. हम लोग ने कर लिया जो हमको कोलैबोरेट करना था. आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, ठीक है. सो लेट्स नॉट गो देयर. आई एम गोइंग टू ट्राई गेटिंग अदर पीपल. मैम, Donna is so witty. Actually, I don't like Donna's character. Do you know that? I just find her. I think she and Harvey Specter वाला जो रोमांस, इट इज सो, सॉरी, बट मुझे तो कोई रोमांस नजर नहीं आता. मुझे समझ में भी नहीं आता वो कपल कैसे. मे बी आई एम जस्ट, यू नो, मैम हमारा जूम फिल्टर तो चेहरा और भी खराब कर देता है, बड़े लोगों से अच्छा कर. ओके, या, सो देयर आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ डॉनर्स कैरेक्टर. ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का, हाँ आज मैंने कलर किया था भाई, सॉरी. हाँ, यू आर 100% गर्ल, आई नो. स्टडी सिंग. ए यार उस्मान, आपने बीच में चैटिंग बंद करो. स्टडी सिंग रियली में लड़का ही है. इफ आई विल नॉट टेल यू हिज इंस्टा आईडी, बट आई एम थिंकिंग कि मेरा काम नहीं है तुम लोग को बताने के लिए कौन कौन है. सो डजंट मैटर. अभी है तो क्या, संदीप, तू उधर भी पहुंच गया क्या? निशिकर राज, संदीप, फिर तू संदीप महेश्वरी की बात करने लगे. अरे बाबा, संदीप महेश्वरी जी ऑलरेडी बहुत बिजी है. वो अलग अलग बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ पॉडकास्ट करते हैं. मैं अभी वो लेवल पे नहीं आई हूँ कि आई थिंक यूट्यूब में, अदरवाइज मैं अपने आंखों में आई एम द बेस्ट, एज यू नो, एंड आई थिंक आई एम यूनिक. बट I think they are looking for people with like बथेरे लाखों फॉलोअर्स. मेरे तो 10,000 भी नहीं है, तो why will anybody want to do? ये भी कभी कभी लाइफ में numbers and all that also matter, ना. So yeah. Oh, my pleasure, Darya. Yeah, I remember. That's why I'm thinking, ma'am, apart from filters, your smile too. Thank you, Anshul said. Thank you. गुलाबी आंखें जो तेरी देखी. अच्छा, मैं गाना क्यों गा रही हूँ पता नहीं, इसने लिख दिया गाना तो मैं गाना गा रही हूँ. Why is sex a big taboo in our society? Hi Ragini, I've seen your name before. Ma'am, I think this has some obsession. Yeah, I think so too. He sort of, Donna is very sharp. Nee, I don't like that character somehow. She might be good as the character, but both of them together, I can't. It's does nothing for me. Why sex is such a big taboo in our society? Because for ages and ages and ages, हमारे सोसाइटी में चला आया है, और सबको इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद फिर भी हमारे लोग, it's to do with culture. You see, we are not so broad-minded. We are not so, you know, progressive in our. हम हर चीज को चेंज करने में इतना
रोकते हैं अपने आप को। अनफॉर्चुनेटली आप कपड़ों को ही लेके देखो, क्योंकि हमारी कल्चरल जो सोसाइटी थी उस घूंघट से लेके अभी ड्रेसेस तक आ रही है, तो ये चेंज आया है और भी चेंज आएगा इंडिया में, विद टाइम हो रहा है। आप देखो अभी एलजीबीटी कम्युनिटी, आपने देखा अभी किसी और की भी 2 लड़कों की शादी हुई है, 2 लड़कियों की शादी हुई है, इट इज चेंजिंग। सो वेट फॉर इट, गिव इट सम टाइम, एंड आई थिंक, एंड यू नो देयर इज नो हेल्दी बैलेंस। लाइक थोड़ा सा किसी का, अभी आपने अगर से देखा कि वो बंदा पानी में गंगा गंगा तक कहाँ थे वो, कोई तो भी पिलग्रिमेज में पति अपने पत्नी को किस कर रहा था, या किसी ने मेट्रो में हाथ पकड़ लिया। वी आर सच अ सोसाइटी, वी आर सो against PDA because we, by our mindset, we consider that as like very, हमारा जो moral compass है हमारे हिसाब से वो पाप में आ जाता है, वो वाला कि सबके सामने के लिए हाय कैसे तुमने दारू पी लिया, हाय तुमने ऐसा कैसे कर दिया। तो ये चेंज आने के लिए, वेदर कपड़ों में, सोच में, इस सब को तुम्हारी जनरेशन और तुम्हारे बाद की और उसके बाद की ये जनरेशन चेंज करेगी। हमारे जो हमारे, as I am very different from my generation people also, and I'm like wow, how can you even say कि periods हो गए और मंदिर नहीं जा सकते। मैं तो कभी इमेजिन नहीं कर सकती, because I'm like ये कौन सा भगवान है जो मुझे periods में मना कर रहा है जाने के लिए, because it's a natural process for a woman, right? So अब ये मेरी mindset है, क्योंकि मे बी मैं पहले से बहुत different थी, but that's okay, we have to go with what our cultural setting is, but we don't need to stay there, we need to progress, but we don't need to completely follow the West. मुझे लगता है जब one night stands, casual sex, and all these things, incest and all these things, I think इतना भी over the top जाने की जरूरत नहीं, थोड़ा अपना cultural values रखना जरूरी है, completely give up मत करो। and yeah, लोगों को स्पेशली बिकॉज बच्चे फिर छुप छुप के गलत चीजें करते हैं। एक अभी भी रिसेंटली एक लड़की का मैसेज आया, एंड शी वाज लाइक आई थिंक आई एम, मैंने पहले भी एक केस आया था, अभी भी एक आया कि आई, शी वाज इनटू कैजुअल डेटिंग, she said first I slept with someone and then now I slept with this guy, and she was hardly 17 or something, and I'm like, she said now I, so what happened is she got feelings for this second guy, not for the first one. And then this guy said, but it was only casual. And remember, abhi maine casual dating pe, sorry, friends with benefits wala maine tumhe video banaya tha. So then I told her, I said, what are you all doing? Just because the West is doing doesn't mean you need to sleep with every fucking person you meet. You need to be little दिमाग लड़ा के कि किसके साथ, कब, क्या सही वक्त है, क्या सही रिलेशनशिप है। सो ये सब सोचना बहुत जरूरी है। सो यू डोंट नीड टू कंप्लीटली बिकम लाइक द वेस्ट, थोड़ा बहुत अपने कल्चरल वैल्यूज और अपना दिमाग यूज करो, क्योंकि जिंदगी आप ही की बर्बाद है, ठीक है। अच्छा क्या रागिनी, सेक्स टाबू मींस के no sex talk is taboo. What are you saying, Usman? That is also taboo. LGBTQ is also taboo. It's not like that, okay ma'am, I'm thinking yeah, okay, Ranveer Alavadia पता नहीं वो करेंगे कि नहीं, मेरे को अभी रणवीर is like there at the top, so I'm not very sure. Do you? No, I don't listen to Osho, I don't read him, I don't do all this. Manipulation in what way? You're talking about hypnosis? That is suggestions, not, we are not manipulating you. So that's more a negative term. We embed suggestions so that in your waking state you act on things that you don't generally act on, and you'll have more willpower, more happiness, more, if you want to quit any particular bad habit, we help with that. Okay, Harsh Kumar, good evening. Attendance mods, attendance लगा दो मेरी। Okay, मैंने थोड़ा सा सुना बहुत, क्या क्या बस ये बातें करते हैं कि वो कौन कौन, अच्छा ओके गाइज आई गॉट टू गो, 12 बज रहे, मैंने रियलाइज नहीं किया। अच्छा तो हम चलते हैं, अपना ध्यान रखना, एंड आई विल कम बैक सून। और हर्ष नेक्स्ट टाइम थोड़ा जल्दी आना, मेरे पॉडकास्ट खत्म होने के पता नहीं कितने मिनट पहले आ रहे हो तुम। एंड या आई होप आई रिप्लाइड टू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। ओके हाँ, इलॉन मस्क मेरे लिए रुका है पॉडकास्ट करने के लिए।
अरे तुम लोग भी ना, जब तुम लोग ऐसे ऐसे बड़े लोगों के साथ काम करने लग जाओगे, मेरा नाम ले लेना, फिर मैं उनको बुला लूंगी, ठीक है? सो अभी तो आपने को पता नहीं। तुम लोग मेरे लिए देखो, हम लोग यहाँ कितने खुश है, राइट? हम है 15 लोग, ठीक है? पर 15 लोगों में हम एकदम ब्लिसफुल, दैट शुड बी लाइफ। नाम, मनी, तुम लोग भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। जैसे आई एम नॉट अ बिग यूट्यूबर, बट फॉर यू ऑल, you respect me so much, that's also like a big deal for me, so don't go after name and all that, कोई बात नहीं, हम सब खुश है, ठीक है? रचना मैम, यार क्या मैम, बस आप बोलते जाओ, सुनना सुनना अच्छा लगता है। थैंक यू स्टडी सिंह। ओके, बाय बेटा, बाय हर्ष, बाय धैर्य, बाय रोहित। ये रोहित, रचना मैम, यार के आगे यार क्या है, एक्सक्यूज मी। ओके, यू नो हु, नो आई डोंट नो हु यू आर, बट बाय, सी यू गाइस। अपना ध्यान रखना मेरा बच्चा लोग, द कनेक्ट इज इम्पोर्टेंट, या एंड जो बच्चे भी नहीं है वो भी अपना ध्यान रखना। बी गुड, बी नाइस, बी काइंड टू योरसेल्फ, एंड कोई प्रॉब्लम हो तो डू कनेक्ट विद मी। और किस चीज की वीडियो करनी है मुझे, किधर है, किसने को वीडियो में टॉपर, सिंगल चाइल्ड। ओ यार, मेरा नेक्स्ट टॉपिक इज नॉट ऑन सिंगल चाइल्ड, इट्स ऑन, एक था येलो फ्लैग जो मेरे टीम ने अभी तक एडिट नहीं किया। अरे यार, कोई भी अगर से वीडियो एडिटिंग करता है, बेसिक एडिटिंग आती है, आओ मदद करो, वॉलंटियर करो। तो वीडियोस रेडी है, पर हमारे पास सॉरी, वीडियोस को एडिट करने के लिए, थंबनेल्स के लिए लोग हैं, पर वीडियो एडिटिंग के लिए इनफ नहीं है। जिनको कुछ अच्छा करना है सोसाइटी के लिए, कम जॉइन माई टीम। एंड जो नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड, बट अगर से आपके पास थोड़ा भी टैलेंट है, आओ मदद करो, ताकि थोड़ा ज्यादा प्रोग्रेस हो यूट्यूब चैनल पे। एंड देयर आर सो मेनी पॉडकास्ट वी हैव डन। कोई कोई लोग पूरा एक एक घंटा नहीं देखते, तो वी नीड पीपल टू लाइक हेल्प अस विद एडिटिंग दैट एंड जस्ट पोस्टिंग दैट। तो वो नहीं हो रहा हमारा अभी। एक टीम मेंबर का एक्सीडेंट हो गया, दूसरा टीम मेंबर मूव कर रहा है, तो कुछ ना कुछ चलते रहता है। अभी देखो, तुम लोग सुपर चैट का भी पैसा नहीं देते, मैं कहाँ से आए करूँ लोगों को? तो जिनके पास फ्री टाइम है, मदद करना चाहते हो, ओ आई एम एडिटर राज, प्लीज इफ यू कैन, श्योर राइट टू मी, DM मी ऑन इंस्टा, एंड देन आई विल इंट्रोड्यूस यू टू माय टीम, ठीक है? मैम, अच्छा नंबर लगे अलग से मिलूंगा, देन विल टेल हिम टू हैव अ पॉडकास्ट। अच्छा, ठीक है स्टडी सिंह। ओके मैम, आपने सबसे पहले मेरा नाम लिया, आई एम सॉरी उस्मान। उस्मान, मैं सबका नाम लेती हूँ, ठीक है? मैं जितना मेरे से होता है, मैं थक भी जाती हूँ, बट आई ट्राई टू आंसर एवरी क्वेश्चन दैट आई गेट। यू ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, एंड यस देयर आर टाइम्स दैट मैं नहीं कर पाऊंगी, बट जब मैं कर सकती हूँ करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? अपना ध्यान रखो। और अब मैं चली, मेरा तो वैसे भी ये मेरा ट्रेट हो गया है, मैं चली चली बोल के यहीं बैठी रहती हूँ। तो अब मैं सच में जा रही हूँ, ठीक है? अब कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, सब लोग गुड नाइट और बाय बोलो मैम को। और जो मैम नहीं बोल रहे अब, और कोई बड़े लोग हो तो, बच्चे नहीं हो तो मैम नहीं बोलना, रचना बुलाना है, दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है? टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट, एंड आई शैल बी बैक सून, बाय।